IPL T10 is brought to you by Deconcepts and 5G Group of Companies. It's all about real estate. Hello and a very warm welcome to Rawalpindi Cricket Stadium. We have the Deconcepts Celebrity T10 League powered by 5G Group of Companies. It's a second semi-final and we have Islamabad Warriors up against Lahore Heroes live from the Rawalpindi Cricket Stadium. We have seen some scintillating cricket over the last 3 days and we are right down to the semi-final stage where we have the second semi-final today. The beautiful visuals from the Rawalpindi city, as you can see. The famous food street and the famous Rawalpindi Cricket Stadium alongside the famous Murray Road from Rawalpindi. And talking about this game, it's a second semi-final. And about the toss, the coin flip, it was won by Islamabad Warriors. And they have decided to bat first at this grand semi-final of Deconcepts Celebrity T10 League. This was a coin toss early on. Islamabad Warriors, they have won the toss, opting to bat first. The captain Mohammad Rana was very confident at the toss. And in the comm box, I've been joined by Hijab. Good evening, Hijab. It's a very warm and a humid day, but we're all set for a great contest. Thank you so much for the warm welcome, Naman. So everybody who's listening, this is live from Pindi Stadium. We are almost at the showdown to the finale of this Deconcepts Celebrity League T10, second semi-final between two very strong teams, Islamabad Warriors and Lahore Heroes. For Islamabad Warriors, the playing 11 is the captain Mohammad Rana, Arbaz Khan, Asim Mahmood, Rizwan Ali, Agha Shiraz, Zaman Khan, Mirza Zain Beg, Adnan, Saad Rashid, Asif Ali and Muhammad Rashid. Coming to the Lahore Heroes, winning 2 out of 2 games in the competition, led by Salim Sheikh, the captain, Danial Arshad, Kamran Khan, Haider Raza, Salman Faisal, Arsalan Faisal, Mohsin Awan, Imran Imu, Wajib Farooqi, Shoaib Khan and Murad Haider. And about the toss update, Islamabad Warriors winning the toss, opting to bat first. Remember, these two sides are going on head-to-head for the second time in the competition. Absolutely. We had a very good match between these two teams, Islamabad and Lahore, on the very first day. And that particular event, that particular match was won by Lahore Heroes. This time, though, Mohammad Rana, the captain of Islamabad Warriors, is very much motivated to balance that game out and win this knockout and take his team to the finals. What is your prediction for today's match, Naman? I'm really looking forward to the second semi-final. Both of these sides, they have won their last game, but Islamabad Warriors, they lost the first game against Lahore Heroes. So I'm really looking forward that Lahore Heroes, they might have a slightest of the edge over Islamabad Warriors, but it's a knockout game. It's a different ball game altogether. Winner will go through to the final. The loser, he will have to go back home. It's good to see that both of these sides, as a spirit of cricket, everyone was shaking hands and everyone is so excited for this encounter. Lahore Heroes will be batting first. We have seen Islamabad Warriors, I beg your pardon, they are batting first. In the last game, Mohammad Rana, the captain, he batted first against the Quetta side. They put on a decent total on the board, courtesy Zain's brilliant performance. And today, I guess we have a very balanced side. Both of these teams, they have a brilliant squad and some great performances we have seen from both of these teams in the tournament. Well, Islamabad Warriors do have a little bit of edge today because they have won the toss and they have chose to bat. And the basic trend that we've seen throughout the Deconcepts League is that the batting side have won the matches, majority of the matches. Yeah, coming about the runs, Salman Saeed, the leading run scorer of this tournament, he scored a scintillating 100 last night of 35 deliveries, 159 runs in 3 games with 1 half century. Kamran Khan, he's no less than that, 123 runs, 2 games, 2 half centuries. Zain Fazal, 101 runs. Kashif Majid from Peshawar Tigers, 94 runs. And Humayun Alamgir, 90 runs. Some great batting performances even in the T10 format. I know, and Karachi Royals is clearly dominating this most runs scoreboard right now. Number 1, number 3 and number 5, all from Karachi Royals. So, and to let you guys know, Karachi has already qualified for the finals. So whoever wins this game today will be facing Karachi in the finals. Yes, exactly. Karachi Royals,
They are literally all over the place. Faisal Qureshi, the leading wicket taker with 5 wickets in 3 games, a brilliant economy of 9.33. Harun Shahid, another player from Karachi, picked up 4 wickets in 3 games. Imran Emu, he has a brilliant economy rate. He just stands out among the players with the most wickets in the tournament. An economy rate of 6.75. Ayaz Samo picking up 3 wickets in 2 games, and Mohsin Aman picking up 3 wickets in 2 games, but the economy rate is slightly on the higher side. So it's not only about taking wickets, it's about maintaining the economy rate in this format of the game. Absolutely, and we know this is a game where batsmen usually dominate and the bowlers are usually under pressure because of that flow of runs, but we have seen some scintillating performances from our bowlers here. So we're about to get underway for the second semi-final. Islamabad Warriors up against Lahore Heroes, live from the Rawalpindi Cricket Stadium. Remember, this is a Deconcepts Celebrity T10 League powered by 5G Group of Companies. The first semi-final last night was won by Karachi Royals against Peshawar Tigers, courtesy a 100 from Salman Saeed. And we're about to get underway for the second semi-final. We have 2 batsmen, Mirza Zain Beg and Asif Ali, opening up for Islamabad Warriors. They both have had a pretty good record, especially Zain Beg has been the hero for Islamabad for quite some time now. Outside the line of off stump, played away very nicely down to the fielder at a deep backward point. Oh, the deep third man. Both of these batters will ample across for a single. So coming to the strategy from both of these sides, Lahore Heroes will be looking for wickets early on. Take some wickets, put the pressure on the batting lineup. That has been the recipe for the winning team, hasn't it? They have all chose to bat first, whoever won the toss, and they have been able to put up that big total, and they've been able to defend it as well. Once again, slightly outside the line of off stump, and we have seen some movement from the bowler, given as wide by the umpire. So Mohsin is continuing from the pavilion end in the first over. And talking about the trend at Rawalpindi Cricket Stadium in this T10 tournament, Deconcepts Celebrity T10 League, powered by 5G Group of Companies, a team winning the toss, opting to bat first, putting a decent total on the board, and then going on to defend it. Ah, good delivery. That's beautifully ball. That was a sharp turner and pitched and came right into the batter. Asif Ali had no chance to play that one. So by now, the strategy we are seeing from the batting side is that they look to face out the Mohsin's over. They're not in a hurry to score quick runs early on. That's a tremendous ball. I know even Zain is surprised about that one. Oh, change of pace, outside edge, and the catch has been put down by the wicket keeper. Brilliant change of pace from Mohsin, but the keeper could not grab that one. A chance created by Mohsin for his team Lahore Heroes, but the catch has been put down. A thick outside edge and went straight to the keeper, ricocheted off the gloves, went to the first slip, but neither of them could grab that ball in the end. So a little bit of disappointment here for Lahore Heroes. They're off to a good start, and that wicket could have been very, very valuable. Oh, good delivery. Once again, a change of pace, a slow ball on the leg stump. Ricochet off the pads onto the keeper, and a drop catch in the first over of a semi-final. Let's see how costly would that be. And Asif Ali, he was swinging from the ball one. Absolutely. He was heavily deceived by that ball, but it's been put down. So that brings down the morale a little bit. But let's see how Mohsin and Lahore Heroes respond to that drop catch now. Once again, a change of pace. This time nicely driven out to fielder at backward point. So in the first over, we have seen a lot of varieties, a lot of change of pace, a lot of variations from Mohsin Avan. Was nearly successful deceiving the batsman, but the catch wasn't taken by the wicketkeeper. Salman Faisal was the culprit behind the stumps. We have seen our fair share of drop catches during the tournament, haven't we? A lot of disappointment. Cut away very nicely. The backward point fielder has been busy throughout the first over. So this single concludes the first 1-4 without losing any wickets. Islamabad Warriors, they decided to bat first after winning the toss.
runs of Islamabad Warriors are 4 in 1 over. This is the Deconcepts Celebrity T10 League powered by 5G Group of Companies. The second semi-final, Islamabad Warriors facing Lahore Heroes. Toss was won by Islamabad Warriors. They opted to bat first, to put on 4 runs on the board in the first over. The key to success in this tournament for Islamabad Warriors is Mirza Zain Beg. Whenever he strikes big. The best thing about Zain's batting that I've noticed is that he doesn't take a lot of time, doesn't waste a lot of balls, and just gets going from the very first ball. And that's what you need from your batsmen, especially your openers here in this T10 format. So he has been fulfilling that position to the T, and he's been excellent for Islamabad Warriors. Let's see what he can do today. This is a knockout game, and a very important one if they want to qualify for that final game with Karachi. Some discussion going on in the middle between the bowler and one of the fieldsmen from Lahore Heroes. They'll be looking for a wicket early on, and if they manage to get Mirza Zain Beg inside the power play, that'll be a huge bonus for Lahore Heroes. Full toss on the leg stump, nicely helped away across the fence for a square leg boundary. Good start to the over for Islamabad Warriors. See, that's what I'm talking about. He watches the ball very closely, picks it up very nicely, and he has all the time in the world to play that shot. Look at that. He knew it was on the leg side. He took full advantage of that full toss and was very, very high. I think it's lucky that it wasn't called a no ball, right? Quite a bit of height on that one, but brilliantly played by Zain Beg for a boundary. Welcome boundary for Islamabad Warriors. Seems like a lot of humidity and hotness out there in the middle. Oh, knocked him over! What a delivery! What a comeback! Mirza Zain Beg, he has to walk back to the hut. And what a strike! Timely blow for Lahore Heroes. And have a look at the jubilation. Have a look at the celebration. Mirza Zain Beg, he goes back in the second over. Well, that celebration tells you everything that you need to know. How important this wicket was. Zain is very, very disappointed, and rightly so. He's being hugged here and given a good send-off off of the ground. And he goes for only six runs on 4 balls. Have a look at that beautiful delivery. Trying to heave that one across the leg side. Didn't make connection, and the ball just uprooted the leg stump. Look at the celebration from the bowler. After conceding a boundary, he picked up the wicket. A very valuable wicket of Zain, and then a brilliant send-off as well. So the first wicket has gone down for Islamabad Warriors. Agha Shiraz is the new batter in the center. He has a responsibility up the order and promoted to 1 down now. In the last game, he batted 1 down as well. Well, he's experienced, he's good, and he knows exactly what his team needs right now. So Agha Shiraz is going to be the key player for Islamabad Warriors today. He's taking the leg stump guard. Agha Shiraz is in the game in the second over. A lot of responsibility on his shoulders. Talking about Arsalan, conceded a boundary on the first ball of his spell and then picked up a wicket. Brilliant comeback. Arsalan continuing from the media end, and that's a wide. That's actually a very big wide, and that races towards the boundary for a 4.
So that's not a legit ball, but they're still going to get those 5 pesky runs. Lucky start for Agha Shiraz. Have a look at that way down the leg side. The angle wasn't right, and the keeper, he did a full stride, but he could not stop the ball. Just raced across the fence towards the fine leg fence for a boundary. So a lucky start to the innings for Agha Shiraz. That wicket followed by a very, very wide delivery outside the off stump. We're already up to 6 extras now in this innings. We're only in our second over. And knocked him over. What a beautiful delivery that is. That is a 2 in the over for Arsalan. And Agha Shiraz is stunned. Absolutely stunned. What a comeback for Arsalan. He concedes the boundary and then he picks up a wicket. A sensational bowling effort. And have a look at the dance moves from Lahore side. They are all over the place. Agha Shiraz, he looks dejected. He's walking back to the hut. Second wicket in the second over. A duck for Agha Shiraz. And Arsalan, the wicket taker once again. Have a look at that. Trying to play across the line. This one just came back in. And we got to wait and see that did it just clip the pad. And have a look at the celebration from the wicketkeeper, from Arsalan and all the teammates. Lahore Heroes, they're all over the place. Islamabad Warriors reeling at 13 for the loss of 2 wickets. We are halfway to the second over of this game. And Islamabad Warriors have already lost 2 wickets in this over. The hero of the game is Arsalan today. He's taken 2 wickets in this particular over, and he has stunned the Islamabad Warriors and their fans today. So Jab, tell us what Asif Ali would be feeling at the other end. He has seen 2 batters going down in the space of 3 deliveries. He must be feeling very lucky because he got put down. Else this would have been 3 wickets by now. So Lahore Heroes in the hot, humid weather of Rawalpindi. They've been sizzling hot with bowling. Not with the fielding though. Anyhow, Arsalan, the successful bowler, picking up 2 wickets in his second over. But we're talking about Islamabad Warriors. Since they have lost 2 wickets, must be the rebuilding phase for the local side, for the home side. Remember the other home side, Rawalpindi Star, they've been knocked out last night. They lost their only game against Peshawar Tigers. New batsman in is Rizwan, and he's having a bit of a chat with his partner here, Asif Ali. They must stay on the wicket for a while, get that scoreboard ticking. Otherwise, this is just demolition from Lahore Heroes here. A very happy camp. Got to appreciate Arsalan here. The way he is he's getting the movement off the wicket, off the surface. This is some sensational stuff from Arsalan. Conceded 9 runs, but picked up 2 wickets in his first over. And just as the attacking approach continues, we have a wide first slip. You can call it a second slip as well for Arsalan Faisal. He's continuing from the media center end. He picked up 2 wickets in his first over. Rizwan, he must be under pressure. Again on the leg side, and he's getting quite a bit of movement here. Another wide ball. So that's the trend here. Wide ball, wicket, wide ball. Are we going to have another wicket on the next ball? I'm really expecting a wicket. Not only a wicket, a good one. A swinging delivery, knocking over the stumps once again. Come on, this is a sight for the soaring eyes. Looking for yet another wicket. Slip in the place. Arsalan continuing from the media center end. Oh, that one nicely kept out. Beautifully driven this time. No chance for the fieldsman. In fact, that's a very good fielding effort. He did drop the ball at the deep long on fence, and the both batters will ample across for 2 runs.
Covered quite a distance there, but very good fielding effort nevertheless. Rizwan is off the mark with a double. It's 6 p.m. at the Rawalpindi Cricket Stadium, and the flood towers have been lightened up. We're into the second hour of the play. There's the beautiful Rawalpindi Cricket Stadium, the media center, and this is where Arsalan is operating from. Another good delivery, another excellent delivery, that one. You're talking about the fast bowlers when they are operating with the new ball and the angle, especially what Arsalan is getting. It's just a natural movement off the surface. You got to give him credit for using the new ball very well, although he has been a bit wavered with the new ball, but you got to give him credit, picking up 2 wickets in his first over, dismissing 2 informed batters. Absolutely. His line has been a bit off on a couple of bowls where we saw those very wide deliveries, but other than that, he's been pretty decent. He has given 2 wickets, taken 2 wickets for his team now. Called a dead ball. We'll have to redo that one. Wonder what's going on in the Islamabad dugout right now. Would they be panicking at this moment or not? Since it's the T10 format, the only thing they'll be looking to is just to score runs. Runs is all what that matters. Another down the leg side, a wide ball, and since he's gotten 2 wickets in the over, the captain, he must be frustrated, but he can't say anything to his bowler now because he has produced 2 gem of the deliveries to get the batter. Absolutely, but this has proved to be a very long over though. We have already had 3 wide deliveries, and there's a bit of a chat here between the bowler and his teammates. Just got 1 more ball to go. If it's not, another wide. Excellent delivery, played it across the line, Rizwan, with very soft hands. Took a single, and that takes the total for Islamabad Warriors to 18 at the end of the second over with a loss of 2 wickets. Thank you so much, everybody. The total runs of Islamabad Warriors are 18 with 2 wickets in 2 overs. Islamabad Warriors are up against Lahore Heroes in the second semi-final. We are expecting a lot of crowd in today because we have some musical entertainment as well on this finals day. So second semi-final followed by the final. The light towers have already been lit up at the Rawalpindi Cricket Stadium. Talk about the favourites. The run rate right now for Islamabad Warriors is 9. Let me ask Hijab, who is she roaring for in today's encounter? Well, I was hoping we will get to balance out the games and see Islamabad win this one, since Lahore has already won the one competition they've already had. So, but it seems like a slow start, but we all know that it's just a matter of a few overs and the game can change, like we saw last night. Do you remember that over? 30 runs of 1 over. Rawalpindi Stars conceding that massive over. It was the biggest over of the tournament. And I would really feel sad for the batter that he missed out on hitting 6 sixes. Down the leg side, Murad starts off with the wide. The best thing I have seen in this tournament so far is the number of players who have shown the commitment on the field. Talk about Murad, and he looks very committed to his game. He's very fit, very athletic. He's operating from the pavilion end. Absolutely. You have to give it to all the teams here. They have shown 100% commitment to their game, whether it's in the field or if it's bowling or batting. Whatever it is, they're 110%. This one again towards the leg side. He's angling the ball. He wants to probably bowl a yorker, but not able to target that area just yet. And this one goes towards the leg side for another wide.
Sometimes we have seen the bowlers looking for a movement off the surface, and sometimes we have seen the bowlers struggling to control that movement. So probably that's the case with Murad now, and that was the case with Arsalan in the previous over as well. Ah, good delivery. This one came right into the batter. This one pitched on middle stump and came back into the batter. And we have an uninvited guest on the surface as well. It's our drone camera. Drone must be feeling a bit left out, I think. He wants his fair share of screen time. Everyone does. Everyone does. I do not disagree with that. And just to let you all know, we have a final coming up after this game and some musical entertainment as well. So if you are around in Pindi and Islamabad, please join us live here at the Pindi Stadium. You're going to have the time of your life. Exactly. This is a T10 format. Deconcepts Celebrity T10 League powered by 5G Group of Companies Cricket. Along with the entertainment, we're into the finals day. It's the second semi-final. Islamabad up against Lahore. Outside the line of off stump, yet another wide by Murad. So, is that the hat-trick of wides? I thought that was a bit harsh. I don't know, we have to see the replay. But I thought that one was a bit harsh from the umpire. But yes, that is the third wide of the over. We have only had one legitimate delivery until now. Talk about the fielders on the offside. There's a ring of fielders on the offside. Remember, it's a power play. You only need to have two fielders outside the circle, driven straight down the ground. Could only find the fielder at mid-off, but that's very good running between the wickets. That's the commitment that we're talking about. They're not gonna waste any ball. They know that they've had a slow start. They've only lost 2 wickets, so they're gonna grab every single run there is, and that's some excellent running. Got there safely in time. Being a bowler, when you are struggling with your line and length, the only thing that I think the bowlers should do is just to make sure that the ball just pitches in line. You don't need to worry about the pace, because if you manage to pitch the ball in line, you manage to get that movement off the surface, you'll surely develop your pace later on. The first thing, it has to be the line and the accuracy. This one drilled down to the long on fence. The fielder was placed there. It's only single added to the total. That's a very good throw. Kudos to the Lahore Heroes captain Salim Sheikh. He has done quite the homework here, placing all of his fielders at those key positions. Islamabad Warriors have not been able to get going just yet with those boundaries that we were promised. Well, if you take the extras out of equation, Lahore Heroes, they have been very excellent with their bowling and the field placing. Absolutely. Just need to be a bit more accurate. This one again towards the leg side, and again a wide. So that adds another run to the total for Islamabad Warriors, takes it to 24. And we still have only had 3 legitimate deliveries in this over, so we still have a long way to go. So, Isha, what do you believe? That is it the humidity factor? Is it the ball being wet? That's the reason why the bowlers are not controlling the ball, or they cannot control the way they used to do before. I think it's a bit of everything. All the external factors combining here. And this one has been picked up in the air, straight down the ground for a 4. A very stylish shot, and he's going to get the reward for that boundary. Very well played by Rizwan. The boundary takes the boundary counter to 140 in the tournament. Have a look at that. Straight down the ground with the straight bat. Beautifully struck. No chance for the fielder. Although the fielder was there at the long on boundary, he could not stop that. So boundary takes Islamabad Warriors total 28 for the loss of 2 wickets. Continuing from round the wicket, Murad, yeah, good delivery. And Rizwan, he wanted to run. He probably had this thing in his back of his mind that Murad won't come to take the ball, but that's a good follow through from Murad. Excellent follow through and excellent commitment. Did not let them get away with that single over there. So Rizwan retains the strike, and he's going to be facing the last ball of this over. With this delivery, we'll come to the conclusion of the batting power play. Islamabad Warriors opted to bat first, to winning the toss with the hope that they'll be able to put on 120, 130 and 140 on the board.
a very usual activity in Rawalpindi and Islamabad. If you're the resident of Twin Cities, you must have an idea at where this plane is going. That's a beautiful delivery. A good delivery to finish the over for Murad. We're done with 3 overs. Islamabad Warriors, after winning the toss, 28 for the loss of 2 wickets. This is the Deconcepts Celebrity League, powered by 5G Group of Companies, here from the Rawalpindi Cricket Stadium. All right, then it's the second semi-final of the Deconcepts Celebrity T10 League, powered by 5G Group of Companies. Islamabad Warriors taking on Lahore Heroes, live from the Rawalpindi Cricket Stadium. It's a very hot and a humid day, but the sun has settled down a bit. Got to wait and see the nerve settling down is or not from the bowler. 10 runs conceded by Murad in his first over. We have a little bit of water break going on in the center. It's very important to keep yourself hydrated. In this weather, the sun is merciless these days. So that's what our players are doing at the moment. And for all our viewers that are watching, this is Deconcepts Celebrity T10 League, powered by 5G Group of Companies. This is the second semi-final between Lahore Heroes and Islamabad Warriors. We have a final coming up. Whoever wins this game will be playing Karachi Royals in the final coming up right after this game. And we have some musical entertainment for the residents of the Twin Cities as well. Thank you so much for the valuable information, Hijab. Much appreciated. This is the second semi-final, and this is more like the finals day you normally see in the English T20 Blast. And some cricket, some entertainment going on, and some sleep going on in the comm box as well. But you gotta give credit to everyone for chipping in all the efforts to make sure that this tournament happens and everything just takes place in the time. A little bit of a fuller delivery, but on the leg side once more from Arsalan. He's continuing with his second over, but that has been called a wide as well. So keeping up with the tradition, we have had wide balls as the first deliveries on all of our 3 overs until now. A very interesting fact, in the first 3 overs, 29 runs have been scored, and out of 29, 14 have been extra. So 50% runs scored by Islamabad Warriors are extras. You should say thank you to the bowling of Lahore Heroes. This one trying to heave that one across the mid-wicket fence, given as a no ball by the umpire. So they continues to be good for the extras, or bad for the Lahore Heroes bowlers. Arsalan clearly overstepping there for that ball. It's been called a no ball, signaled by the umpire, and we have the first free hit of this game coming up. Let's see if it's going to be a big one. Good change of pace, but nicely drilled out to backward point. No chance for the fieldsman, and the ball will race across the fence for a boundary. So a brilliant start to the over for Islamabad Warriors. Taking full advantage of that delivery. It was a free hit. Asif Ali makes no mistake. He was anticipating that ball out of the off stump. He got that, stayed a bit in the air, but crossed the fence nevertheless, adding 4 runs to the total. It's again outside the line of off stump. It doesn't seem to be controlling that movement, and this has been given as no ball once again by the umpire. So the free hit will continue for the bowler, and the umpire signaled it as a wide. Have a look at that. Once again, clearly overstepping Salan. Good decision by the umpire. Excellent decision by the umpire.
And it's been called another free hit. So this is a bit of good news for Islamabad Warriors. They can go ahead and score some quick runs right now. And Lahore Heroes need a bit more discipline in their bowling lineup at the moment. Oh, what a shot that is. He's just picked the length. What a strike. Down to mid-wicket for a boundary. So the runs are coming. They'll surely take it. That was a pretty good shot, if you ask me. He was anticipating the ball coming again towards the leg side. The footwork was amazing. He placed himself over there and took the ball towards the boundary. Have a look at that once again. That was a very good shot. The shot of Asif Ali really had the Asif Ali in it. Down to the mid-wicket fence. That's his favorite zone. Seems like every Asif Ali follows the leg side as his favorite zone. He's favoring the leg side once again, facing Arsalan Faisal. Outside the line of Assam, thick outside edge. There was no fielder placed there at the mid-off. It's only a single. Daniel will do the fielding. I feel like Asif is a bit more comfortable now. He has played 10 deliveries in total now, so we're seeing a bit more confidence from him. He's trying to take those risks and trying to score those runs, because obviously this is T10. Can't play a lot of dot balls there, can you? Driven with the straight bat, but a good fielding effort from the captain. Salim Sheikh fielding there at short covers. It's a rare dot ball. Talk about Islamabad Warriors. They haven't scored a lot of runs off the bat, but they have been very lucky with the number of extras, the number of wides, no balls, leg buys. Yeah, almost about, I would say, 30 to 40% of the total is the extras. So they have been lucky in that department. And Lahore Heroes, something must be going through their minds right now. They need to be a bit more accurate with their bowling. This one is pitched up. He wanted to play it across the line. A little bit of an edge there and a little bit of confusion there between both the runners. They were trying to take that single, and now they're back for that double. So there's a bit of a fumble with the runners and with the fielders as well. Seems like everybody's feeling the heat. Yeah, exactly. Seems like everything's going for Islamabad Warriors' way. I mean, there was never a run, and they converted a 1 to 2, and this is just sensational cricket from Islamabad Warriors. As they say, luck favors the brave. Surely the luck's on Islamabad Warriors' side. Let it be the wide balls, extras, or some sloppy fielding. You can't say they are not taking those risks. It's again driven with the straight bat out to the fielder at long on. A single will conclude the 4th over. With that 43 on the board for the loss of 2 wickets, Islamabad Warriors, they opted to bat first after winning the toss. They must be happy with their progress. Deconcepts Celebrity T10 League powered by 5G Group of Companies. It's the second semi-final from the Rawalpindi Cricket Stadium, where Islamabad Warriors, I beg your pardon, and Lahore Heroes are head-to-head in this competition. The hashtag for it is Khel To Ab Hoga. It's the 4th day of the competition and the finals day. Islamabad Warriors versus Lahore Heroes. And talking about the progress up till now, 43 on the board for the loss of 4 wickets, for the loss of 2 wickets in the 4 overs. Who's leading the game up till now? Well, it's very hard to say, but Lahore Heroes have been very good with their bowling. Just about those extras, they've had a few extra runs they have given to Islamabad Warriors, which they would like to cut back on. But overall, it's been a pretty good performance from Lahore Heroes today. Islamabad Warriors will be feeling that heat because, like Mohammad Rana said at the toss, they will be looking to get a big total on the board that they can defend easily in the second innings.
Talking about the big totals, we have seen the highest total last night where Salman Saeed scored 100 for Karachi Royals. They put on a massive 170 on the board. So Islamabad Warriors, they must be eyeing something near to 170, probably 160. And if you got to accept the bare minimum, 130 and 40 would do as well. Well, I would say at this point they must be looking at around 110, 120. But you know, the game can change within an over. So let's see when we get to see that over. It's only about when, not if. Vaji will continue. And it's its first over. It's the first sign of spinners from Lahore Heroes. They have been banking on the pacers or the medium pacers. Captain Salim Sheikh is depending on his spinners to provide another breakthrough here. This could go either way, you know, either towards it could benefit Islamabad Warriors or Lahore Heroes. We'll just have to wait and see what happens here. A bit of excitement in the air. Oh, a bit of footwork there from Asif Ali, but wasn't able to connect with the ball at all. He was totally deceived by that delivery, and that was pretty well bowled by Vaji. Seems like Vaji understands the situation and the pitch very well. The discussion going on between both of these batters. He has been changing the pace. This was a very slow ball. Just looped up in the air. And now Asif Ali, he must be eyeing the leg side. There are plenty of protection on the leg side. Deep mid wicket. Corner, deep long on. Good change of pace once again, taking the ball away from the batter, not giving him any sort of pace to work around with. And it was fairly outside the off stump. It wasn't a wide, but still Asif Ali had to reach out to connect with that ball and wasn't able to do that successfully. This time played up in the air, no fieldsman was there, and a good effort from Arsalan. He did some running to stop that ball. Covered a bit of ground there, Arsalan, but showing his commitment to the game once again. He has been the star until now. He has provided 2 wickets for Lahore Heroes already. And now he's doing his best in the field. This excellent presence of mind from Vaji, but nicely played out to backward point. No chance for Arsalan this time. A welcome boundary for Islamabad Warriors. That's a pretty good looking shot there from Asif Ali. He waited for the ball, got down, cut it towards the third man boundary. A little bit square of that. And it races away to the fence. And that's a welcome boundary for Islamabad. Got a feel for Vaji though. That was a very good delivery. But a good presence of mind from the batter as well. So great all-round cricket we are witnessing at this Deconcepts Celebrity T10 League powered by 5G group of companies. Umpire just asking bowler to wait a bit. Come on, take it easy. We know it's a semi-final. But you got to take it easy. But not taking easy right now is Asif Ali. Played out to the long on fence for a massive 6 to finish the over. And that's more like it. Keeping in tradition with his name, Asif Ali goes for that big hit down the ground and added maximum to his team's total. That takes the total for Islamabad Warriors to 56 for the loss of 2 wickets. And we are at the end of our 5th over. अस्सलामुअलैकुम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से और रावलपिंडी की ये खूबसूरत शाम और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मौजूद जावेद आपको कहते हैं वेलकम। बहुत शुक्रिया साइम और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिल्कुल जी, बनता है 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो कि पावर्ड इस बिग स्पॉन्सर दिस टूर्नामेंट के और दूसरा सेमीफाइनल जिसकी पहली इनिंग का आगाज हो चुका है। 5 ओवर के अख्ताम पर 56 रन है और यहाँ पर क्लीन बॉल कर दिया, क्रॉस ऑफ द लाइन खेले
चेंज ऑफ पेस से आए थे इमो और लाइन की गेंद को क्रॉस खेल दिया है और यहाँ पर एक और नुकसान। इमो ने आकर पहले ही ब्रेक थ्रू दिला दे पहली गेंद पर अपनी टीम को, जहां पर पहले से 2 नुकसान थे। हालांकि कैच भी ड्रॉप हुआ था विकेट कीपर सलवार से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया, जो कि काफी खतरनाक साबित हो रहे थे, जिन्होंने अब तक 13 गेंदों पर 11 रन बना रखे थे। साइम जी बिल्कुल, बड़ी विकेट यहाँ पर हासिल की रिजवान की। सेट बैट्समैन थे टूर्नामेंट में, हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी है। बॉल आप देखें, पीछे पड़ा हुआ बॉल था और इसे लेग साइड की जानिब खेलना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप उड़ा दिया बॉलर ने और कीपर और बॉलर बहुत खुश इस विकेट से। बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी ऑल ओवर द टूर्नामेंट। रिजवान की हमने परफॉर्मेंस देखी, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही और आज अरबाज खान आए बैटिंग के लिए। अरबाज खान की अगर लास्ट मैच की बात करें तो उन्होंने 2 ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया था और बड़ी अहम विकेट्स उन्होंने हासिल कर रखी थी। अब बैटिंग की जिम्मेदारी उनके नाजुक कंधों पर। यहाँ पर बड़ी स्क्रीन की बात की जाए, छोटे स्क्रीन की बात की जाए, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है, लेकिन आज उनकी टीम को ज़रूरत है अरबाज खान से एक निस्फ सेंचुरी की भी, क्योंकि सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 5.1 ओवर का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन स्कोर बोर्ड पर 56 रन है और 3 कीमती विकेट का नुकसान अब तक बर्दाश्त कर रही है इस्लामाबाद वॉरियर्स की टीम। साइम जी बिल्कुल, Deconcepts presents Celebrity League T10 powered by 5G Group of Companies और आज के दिन का पहला सेमीफाइनल और ये इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल। इस्लामाबाद वॉरियर्स मध्य मुकाबिल हैं लाहौर हीरोज़ के। और जावेद, आपके ख्याल से 5 ओवर्स हो चुके और ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, और बड़ा खूबसूरत मंजर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द। और ये बॉलर बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की थी लास्ट बॉल पे। यहाँ पर रनर में कुछ एडजस्ट नहीं कर पाए और साथ साथ गलबन सलमान ने भी इनको कॉल कर दी, कुछ फील्डिंग पोजीशन दुरुस्त करना चाह रहे थे सलमान, जिसकी वजह से इमो को अपने रनअप के बाद वापस लौटना पड़ा अपने बॉलिंग मार्क की जानिब। और स्कोर बदस्तूर 56, 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की 1 गेंद हो चुकी है। बड़ी अच्छी बॉल करवाई थी और अरबाज खान ने मना किया बैट्समैन को, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद हैं, कि वहीं पर खड़े रहें, रन्स नहीं बनाएंगे क्योंकि विकेट गिर चुकी है, प्रेशर है, आराम से संभल कर इस इनिंग को रीबिल्ड करेंगे। 4 ओवर्स का खेल बाकी है। आपके ख्याल से कितना रन्स यहाँ बन सकता है? यकीनन अब वो बड़े नाम तो अब वापस लौट चुके हैं डगआउट और यहाँ पर एक इस पार्टनरशिप की बड़ी अहम ज़रूरत है, गो के अगर बात की जाए यहाँ पर बाउंड्रीज अच्छी तादाद हो तो 9 आउट के हमें यहाँ पर इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है उसमें 90 से 100 रन के दरमियान बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आसिफ अली क्रीज पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन ये वो आसिफ अली नहीं है, ये आसिफ अली है इस्लामाबाद वॉरियर्स के। और देखना है उनके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उनको मौका कम मिल रहा है। दूसरी जानिब उन पर प्रेशर है साइम, क्योंकि उनके साथ 3 बड़ी विकेट जो है वो गिर चुकी हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप पड़ा हुआ बॉल खेलना चाहते थे, इसे कट करना चाहते थे, मगर बदकिस्मती से फील्डर वहां पर मौजूद थे तो अरबाज खान को कोई सिंगल नहीं मिलेगा। यहाँ पर इम्मू, जो कि मैं आपको बता रहा था पिछले मैच में भी कि क्रिस गेल से इनके रिजेम्बलेंस है और बड़े अच्छे बॉलर। शॉर्ट बॉल, बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन फिर से सिर्फ 1 रन मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह की आज उनकी बॉलिंग है इमो के, जिन्होंने पहली गेंद पर विकेट हासिल की, फिर डॉट, फिर डबल, फिर डॉट, फिर सिंगल। अब तक सिर्फ उन्होंने 3 रन दिए 5 गेंदों पर। अगर मीडिया में बात की जाए, सेलिब्रिटी, इनकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान में। और इस वक्त आपने हेयर स्टाइल की बात की तो नो डाउट कि उनका ये हेयर स्टाइल काफ़ी पुराना है और उन्होंने अरसे दराज हेयर कटिंग नहीं की और एक स्टाइल अपना जो है वो अपनी पहचान आप है। जिस तरह क्रिस गेल अपने हेयर स्टाइल से पहचाने जाते हैं, उस तरह इमो पाकिस्तान में जो है वो अपनी एक मिसाल आप है। यहाँ पर एक अच्छी गेंद और यहाँ पर आसिफ अली ने पॉइंट की रीजन में खेला, वहाँ पर फील्डर मौजूद थे 30 यार्ड सर्कल में। नॉन स्ट्राइकर एंड से अरबाज खान चंद कदम आगे जा चुके थे, लेकिन उनको मना किया आसिफ अली ने कि खतरनाक साबित हो सकता है। अब वापस लौटे। 16 गेंदों पर आसिफ अली ने अब तक 23 रन बनाए हैं, जबकि 4 गेंदों पर 3 रन के साथ अरबाज खान इस विकेट पर मौजूद है। 6 ओवर के इख्तिताम पर 59, 3 विकेट के नुकसान पर। ये बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं ड्रोन का ये व्यू और 6 रोड के मनाजर और रावलपिंडी की बिजी रोड और बड़ा खूबसूरत ये रावलपिंडी स्टेडियम के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं ये। और अरबाज खान स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद और इस लीग का हैशटैग खेल तो अब होगा और रावलपिंडी में अब खेल तो हो रहा है। बिल्कुल, खेल इस वक्त हो रहा है और ये खेल अपने कामयाबी से अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। सेकंड सेमीफाइनल इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जा रहा है, जहां पर इस्लामाबाद वॉरियर्स
और लाहौर हीरोज़ के दरमियान ये मैच इस वक्त जारी है। लाहौर हीरोज़ फील्ड कर रही हैं, जबकि इस्लामाबाद वॉरियर्स ने अब तक 59 रन बनाए हैं। 6 ओवर के अख्ताम पर 3 कीमती विकेट का अब तक नुकसान बर्दाश्त कर रही है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे थे फील्ड पोजीशन की, तो कैप्टन सलीम शेख उसी इंपॉर्टेंट फील्ड पोजीशन पर मौजूद। आउटसाइड ऑफ स्टंप पड़ा हुआ बॉल खेलना चाहते थे इसे पॉइंट के रीजन में, मगर अंपायर ने अपने बाजू खोले और कहा ये वाइड बॉल है, एक्स्ट्रा है, तो इसी के साथ पहली बॉल वाइड करवा दी। कामरान कुछ देर बातचीत के बाद हंसते मुस्कुराए, एक खूबसूरत जस्टर देखने को मिला अंपायर के ऑफिशियल के साथ। मलक इब्रार जो कि इस वक्त फ्रंट अंपायर है, और यहाँ पर एक मरतबा फिर ये वाइड बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और मलक इब्रार एक मरतबा फिर अपने दोनों बाजू को फैलाकर इस बात का जवाब दिया स्कोरर को कि यहाँ पर एक और फाजिल के रन अपने उनके अकाउंट में लिख दीजिएगा। कामरान इस वक्त अपना ओवर कर रहे हैं। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मिस कर गए इस गेंद को। हम दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बैट्समैन आसिफ अली को देख रहे हैं कि वो जल्दी में लग रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो स्ट्राइकिंग एंड पर आएं और बॉल को स्ट्राइक करें, लेकिन मौका नहीं दे रहे अरबाज खान। डॉट बॉल, फिर एक अच्छी बॉल और बड़ी जबरदस्त गेंद, अंपायर की उंगली गई हवा में और कहा जाए डग आउट में। अंपायर का फैसला बाद में, लेकिन अरफाज खान पहले ही चल पड़े। उनको पता चल गया था कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर हुआ है। सलमान ने अपील की और इससे कबल ही चहलकदमी करते हुए सर झुकाए हुए अरबाज खान पोलैंड की जानिब एक और कामयाबी। यहाँ पर ईमो की बात करें, अरसलान की बात करें, तो यहाँ पर अब कामरान ने भी कामयाबी दिलाई है अपनी टीम को। ये बॉल देख सकते हैं, बड़ा अच्छा बॉल था और अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए कुछ थोड़ी सी बॉल को लो रखना चाहते थे, लेकिन एच दे बैठे कीपर के हाथों में गेंद और जाना पड़ेगा इन्हें डग आउट में वापस। विकेट गंवा दी अपनी। इसी के साथ इस्लामाबाद वॉरियर्स ने अपनी विकेट गंवाई। अब बॉल एक बार फिर से देखिए, थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ बॉल, अरबाज खान इसे पॉइंट के रीजन में खेलना चाहते थे, लेकिन कीपर ने आसानी से एक कैच ली और एम्पायर ने अपनी उंगली खड़ी की। और मुराद बहुत खुश, टीम बहुत खुश। सलीम शेख का मुस्कुराता हुआ चेहरा इस बात का सबूत कि कितनी इंपॉर्टेंट ये विकेट। 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6.1 ओवर के बाद। हैशटैग खेल तो अब होगा 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट SGDCL T10। और लाइट्स आप देख सकते हैं स्टेडियम में, और इसी के साथ बड़े इंपॉर्टेंट बैट्समैन खेलने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल, और आसिफ महमूद आए हैं। बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक तो सियालकोट से है, लेकिन इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं इस्लामाबाद वॉरियर की, और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। इन्होंने मुख्तलिफ ड्रामा सीरीज में बड़े अच्छे किरदार अदा किए, और अब देखना ही है कि उन पर जो जिम्मेदारी है वो किस तरह निभाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 61 रन हो चुके हैं 6.1 ओवर में, लेकिन 3 कीमती विकेट का नुकसान बर्दाश्त कर रही है इस्लामाबाद वॉरियर की टीम। साइम जी बिल्कुल, आसिफ महमूद की हम बात कर रहे थे, तो काफ़ी जो है जो रोल निभाते हैं ड्रामास के अंदर वो रोल, लेकिन आज हमें मुस्कुराते हुए दिखे। आज की फील्ड पे कल भी हमें मुस्कुराते हुए दिखे। जैसे एजाज बात कर रहे थे, काफ़ी सीरियस रोल निभाते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर आप देख सकते हैं फील्डर्स जो हैं लाहौर की टीम के, वो तैयारियां कर रहे हैं कि जैसे ही कोई कैच आए फ़ौरन से उसे लपक लें, और क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट ये गेम है, डू या फिर डाई, और इस इंपॉर्टेंट मौके पे लाहौर भरपूर फ़ायदा उठा रही है। बिल्कुल साइम, और आसिफ अली पे काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि लगातार उनके साथ जो है वो विकेट्स गिरने की जो तादाद है वो रुक नहीं पा रही, और तकरीबन अब तक 4 कीमती विकेट्स का नुकसान बर्दाश्त कर रही है। अरसलान ने पहले ओवर में बड़ी शानदार कामयाबी दिलाई, लेकिन उसके साथ साथ अरसलान ने अपने लाइन और लेंथ को कंट्रोल नहीं रख पाया। अगर देखा जाए तो अभी तक इस टोटल में एक्स्ट्रा की तादाद अच्छी खासी है। बैट से इतने रन नहीं बने जितने इन 61 रन में एक्स्ट्रा के रन हैं, जिसमें वाइड की बात करें और बाई की बात करें। बिल्कुल एक और गेंद, बड़ी अच्छी गेंद कामरान की, और 6.3 ओवर की बात करें तो 61 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। आसिफ महमूद इस वक्त स्ट्राइक पर है। आसिफ अली मुसलसल नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है, और एक और अच्छी गेंद, इस गेंद को खेल दिया है पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान में। यहाँ पर सिंगल की जरूरत में एक रन मिलेगा, क्योंकि फील्डिंग के लिए वहाँ पर मौजूद है अरसलान। बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है, और कुछ इसी तरह की बॉलिंग की ज़रूरत थी लाहौर की टीम को। और इस्लामाबाद वॉरियर्स की टीम अभी काफ़ी प्रेशर में अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन आसिफ मौजूद स्ट्राइकिंग एंड पर, तो एक्सेलरेशन यहाँ चाहिए होगा।
अच्छा बॉल, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और उस बड़े शॉट पर गए भी और गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए, और गेंद को एक टिकट दिया कि जाइए बाउंड्री लाइन से बाहर जाके बैठ जाइए, क्योंकि मेरे बैट से निकला हुआ ये शॉट बॉल अंदर तो नहीं लैंड करेगा। बिल्कुल साइम, और यहाँ पर आगे पड़ी हुई गेंद और वेलकम किया उसको आसिफ अली ने, जो काफी देर से नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे। अब की बार भेजने में कामयाब हुए। मिड ऑन के रीजन में काफी देर गेंद हवा में रही। इमो जो कि स्लिप पोजीशन पर मौजूद थे, काफी देर इस गेंद को देखते रहे और ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरी। यहाँ पर लेट कट और स्लिप को यहाँ फील्डर को बीट करते हुए थर्ड मैन की जाने बाउंड्री लाइन से गेंद बाहर। तो छक्के के बाद चौका, 2 गेंदों पर 10 रन। आसिफ अली 18 गेंदों पर 33 रन, जबकि इस्लामाबाद वॉरियर्स की टीम ने 7 ओवर में 72 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। आसिफ महमूद और आसिफ क्रीज पर मौजूद, और आखिरी 2 बॉलें 2 बाउंड्रीज, 1 ओवर 13 रन और 1 विकेट हासिल की। स्क्रीन के सामने इमू बड़ी एक्सपीरियंस बॉलर विकेट ली थी, और हैशटैग खेल तो अब होगा 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट DCL T10। जी बिल्कुल, और यहाँ पर गलबन अरसलान अब आए हैं विकेट कीपिंग करने के लिए। चेंज किया गया है सलमान फैसल को, और गलबन उनसे बॉलिंग करवाना चाह रहे हैं कप्तान मोहम्मद राना, क्योंकि स्पिनर यहाँ पर अब तक हमें कामयाब दिखाई दी, क्योंकि फास्ट बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन लास्ट स्पेल अभी देखने को मिला 2 से 3 ओवर, तो वो स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि 1-2 बॉल्स के अलावा जो कामरान के अगेंस्ट आसिफ अली ने जो बड़ी शॉट्स खेली हैं 2, जिसमें एक छक्का और एक चौका लगाने में कामयाब हुए थे। और अगर देखा जाए तो इस वक्त 72 रन है स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। आसिफ अली ने 18 गेंदों पर 33 रन बनाए हैं। आसिफ महमूद 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना चुके हैं। कामरान ने पहला ओवर मुकम्मल किया, उन्होंने 13 रन दिए हैं, 1 विकेट भी हासिल की है, जिसमें अगर बात की जाए तो 1 छक्का, 1 चौका, 1 वाइड और 1 सिंगल के रन उनके इस ओवर में मौजूद है। अगर बात की जाए तो इस इवेंट के, इस टूर्नामेंट के जो ऑफिशियल हैं अंपायर्स इशफाक चौहान, और उनका साथ दे रहे हैं मलक इब्रार इस पूरे टूर्नामेंट में। उसके साथ साथ हमारे ऑफिशियल स्कोरर शकील अहमद तमाम तर जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं, और ऐसे ही लग रहा है कि गालबन जो फैसल है उसके साथ कुछ इशू दिखाई दे रहा है, कुछ गेंद उनके हाथ पे लगी है साइम। जी बिल्कुल, क्योंकि ये आप देख सकते हैं रावलपिंडी का खूबसूरत ड्रोन व्यू, और यहाँ पर चहल पहल हर तरफ, लेकिन बड़ा खूबसूरत व्यू ग्राउंड के इर्द गिर्द। और Deconcepts प्रेजेंट सेलिब्रिटी लीग T10 पावर्ड बाय 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज, और इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस बॉलर इमू को वापस लाया गया है। स्क्रीन के सामने आप मुराद को भी देख रहे हैं। हम फिटनेस की बात कर रहे थे इन प्लेयर्स की, तो काफ़ी फिट हैं, ना सिर्फ अपना सेलिब्रिटी रोल निभाते हैं, बल्कि जब क्रिकेट के मैदान पे आए तो तब भी अपने जलवे बिखेर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है साइम, और इस वक्त बड़े खूबसूरत कलरफुल किट, ग्रीन और डार्क ग्रीन, यहाँ पर लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन, और उसके साथ साथ जो ग्राउंड की जो ग्रास है उससे काफ़ी मुशाबत रखती हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम में से एक है, और इस वक्त सलीम शेख जो कि कैप्टन हैं लाहौर हीरोज़ के, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली हुई। इस वक्त कुछ बातचीत भी चल रही है। इमो अपनी फील्डिंग पोजीशन कुछ दुरुस्त करना चाह रहे हैं, कुछ फील्डर्स जो है वो एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो कप्तान से सलाह मशवरे भी जारी हैं। और यहाँ पर 8वें ओवर के लिए मजबूरी तौर पर अगर देखा जाए तो ये 8वां ओवर है। इनफरादी तौर पर इमो अपने स्पेल का जो दूसरा और आखिरी ओवर करेंगे। 5G के खूबसूरत लोगो क्या कहेंगे इस हवाले से साहब? बिल्कुल, 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज, और उनके बगैर तो ये लीग मुमकिन नहीं थी। सारे सितारे जगमगाते हुए आपको ग्राउंड पर दिख रहे हैं और क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं, तो 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज को देना पड़ेगा क्रेडिट इस 5G DCL T10 का, और इनका हैशटैग खेल तो अब होगा, और खेल तो अब हो रहा है। बिल्कुल, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी हमारे स्पॉन्सर्स मौजूद हैं, और यहाँ पर आसिम जो है हम देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर कि थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 4 कीमती विकेट्स गिर चुकी हैं। बाकी अगर बात की जाए तो 18 गेंदों का खेल अभी बाकी है, और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ और सिर्फ 72 रन मौजूद है इस्लामाबाद वॉरियर के साइन।
जी बिल्कुल, इसी के साथ सलीम शेख स्क्रीन पर मौजूद। बात करें सलीम शेख की तो मैं अपने बचपन से इन्हें टेलीविजन स्क्रीन पर पीटीवी होम की स्क्रीन पर देखता आया हूं और एवरग्रीन एक्टर, और आज इन्हें एवरग्रीन हम ग्राउंड पर भी देख रहे हैं। जगमगाता हुआ चेहरा, हंसता मुस्कुराता चेहरा, और ग्राउंड में कैप्टनसी कर रहे हैं लाहौर की और पहुंचाया है अपनी टीम को सेमीफाइनल में। बिल्कुल जी, अपने ज़बरदस्त हिकमत अमली कैप्टनसी जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसको अभी तक बखूबी निभा रहे हैं। उनकी टीम बहुत एंजॉय कर रही है। कराची की अगर बात करें तो कराची रॉयल्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उनके तमाम बैटर्स ने, बॉलर्स ने, फील्डर्स ने, एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन उनका बन चुका है। फाइनल में उन्होंने कदम रख लिया है। इन दोनों की जो सेकंड सेमीफाइनल इस वक्त जारी है इस्लामाबाद वॉरियर्स और लाहौर लायन के दरमियान, तो अब तक के अगर पलड़े की बात करें तो 7 ओवर में 72 रन और 4 विकेटें। तो यहाँ पर लाहौर ने काफ़ी हद तक इस्लामाबाद को एक बड़े टारगेट से रोक के रखा है। साइम जी बिल्कुल, अभी बड़ी अच्छी एफर्ट थी कीपर की। विकेट कीपर यहाँ पर रन आउट जरूर करना चाहते थे, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो है एक्सेप्शनल रनिंग है और बिल्कुल ऐसे ही रन लेने पड़ेंगे क्योंकि 8वां ओवर 73 रन, 4 विकेटें आप गवा चुके हैं। कुछ ज्यादा बॉलें आपके पास बाकी नहीं है। इनिंग एक्सेलरेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है और अरसलान इस वक्त विकेट कीपिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनको चेंज किया गया है क्योंकि गालबन जो सलमान थे उनके साथ कुछ इशू हुआ, उनको इंजरी का सामना था, उस वजह से वो बाहर जाए। यहाँ पर इमो के एक और गेंद, इसको पॉइंट की जानिब खेल दिया, लेकिन फील्डर जो कि एक्स्ट्रा कवर के डी पे मौजूद थे उन्होंने इस गेंद को रोका। तो यहाँ पर दूसरा रन भी आसानी मुकम्मल किया। स्कोर बढ़ता हुआ इस 2 रन के इजाफे के साथ 75, 4 विकेट के नुकसान पर। देखिए स्लो बॉल थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप इसे डालना चाहते थे, लेकिन बड़ी अच्छी तरह से इसे पुश किया और एक राह दिखाई गेंद को डीप और पॉइंट के फील्डिंग के बीच और बड़े आसानी से रन मुकम्मल किया। इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलने गए डाउन द ग्राउंड, कोई फील्डर मौजूद नहीं। अंपायर का सिग्नल देखना पड़ेगा और अंपायर ने अपना हाथ लहराते हुए दिया कि ये चौका है। यहाँ पर फुल लेंथ गेंद, आगे पड़ी हुई गेंद, जिसके लिए आसिफ अली काफ़ी देर से तगोदोग में थे कि उनको उनके फेवरेट जोन में गेंद मिले। जब भी हिटर को उनके फेवरेट जोन में गेंद मिलती है तो कभी भी नहीं छोड़ते, उसका वेलकम करते हैं। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत हिट, फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, बिल्कुल चेक भी किया गया रहा, लेकिन एक और गेंद यहाँ पर लेट कट खेलना चाहते थे, बैकफुट पे के यहाँ पर टाइम नहीं मिला और ये गेंद सीधा सलान के ग्लव्स में जा पहुंची। अच्छा कमबैक का एक बाउंड्री के बाद इमो ने अब तक 1.4 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट हासिल कर रखी है। 7.4 ओवर का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका है। 79 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। आउटसाइड ऑफ स्टंप पड़ी हुई गेंद और बड़ी अच्छी गेंद थी। वेरिएशन यूज की अपनी और एक्सपीरियंस अपना यूज कर रहे हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप लाइन की ये गेंद डाली थी, कीपर ने अपने महफूज हाथों में इस गेंद को किया सेव। आसिफ महमूद देखते रह गए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, आसिफ मौजूद 39 पर और क्रॉस ऑफ द लाइन खेले। इमो ने अब समझ रखा था कि वाकई वो बड़ी हिट के लिए जो तगोदोग जारी है, उनके पैड को टारगेट किया। उससे कबल आउटसाइड ऑप्शन उनको बीट किया 2 गेंदों पर और उसके बाद तीसरी गेंद उनके पैड पे जाके हिट करने की कोशिश की। बड़ा अच्छा यहाँ पर इमो का ये ओवर 8 ओवर के अख्ताम पर 79, 4 विकेट के नुकसान पर इस्लामाबाद वॉरियर्स। Thank you so much, everybody. The total runs are 79. 79 in 8 overs. जी और इस वक्त 9वें ओवर का खेल जो है उसका आगाज होने जा रहा है। कामरान आए हैं अपना दूसरा ओवर करने के लिए। इमो जो है वो स्लिप में मौजूद है। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद और यहाँ पर अरसलान इस गेंद को रोकने में नाकाम रहे, लेकिन नॉन स्ट्राइक करने से आसिफ जाना चाहते थे स्ट्राइक पर, लेकिन मना किया उनको यहाँ पर आसिफ महमूद ने। जी बिल्कुल मना किया। आसिफ चाहेंगे कि वो स्ट्राइक अपने पास रखें क्योंकि बड़ा क्रूशियल टाइम है। बड़ी हिट लगाना चाहते थे आसिम, लेकिन अच्छी गेंदबाजी का सिलसिला कामरान की जानिब से बड़ी हिट से जरूर रोके रखा और यहाँ पर सिंगल पर
जो है वो मजबूर करने की कोशिश की गई कामरान की जानिब से। साइम जी बिल्कुल, सिंगल पर ही करना पड़ेगा इत्तेफाक, क्योंकि बड़ी शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बॉलर ने कहा नहीं भाई मैं तो शॉट नहीं खेलने दूंगा। इस बार शॉट बॉल करवाई और लेग साइड की बाउंड्री की जानिब खेला, मगर हो गई कैच और दिखाया रास्ता डग आउट का। दे दिया बैट्समैन को टिकट, जाइए बैठ जाइए वापस डग आउट में। एक और विकेट, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट। आसिफ को जाना पड़ेगा वापस हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। बड़ी देर से तक दौड़ में कि बड़ी हिट्स लगाए, 24 गेंदों पर 39 रन के बाद उनकी इनिंग का हुआ खात्मा। कामरान जो कि बड़े शातिर दिमाग है, उन्होंने भांप लिया था कि यहाँ पर आसिफ अली उनके खिलाफ बड़ी हिट लगाना की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने एक फ्लाइट गेंद दी और उस गेंद में इतनी पावर नहीं थी कि वो बाउंड्री लाइन से बाहर जाए और लॉन्ग ऑन पोजीशन बाउंड्री लाइन के करीब फील्डर ने उसको वेलकम किया। कामरान थे बॉलर जिन्होंने ये विकेट हासिल की और उनकी दूसरी विकेट है। मजमूई तौर पर 8.3 ओवर में 85 रन में 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, स्लो बॉल करवाई थी और बड़ी खूबसूरती से इसे खेलना तो ज़रूर चाहते थे, मगर फील्डर मौजूद थे उस पोजीशन पर, क्या कहिए, जाना तो उन्हें पड़ेगा। और स्लो बॉल करवाई थी ये बॉल और लेकिन आसिफ अली इस बॉल पे जाना चाहते थे, लॉफ्ट करना चाहते थे इस बॉल को। और देख सकते हैं आप टीम की सेलिब्रेशन, ये डांस डीजे ब्रावो वाला कल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सलमान फैसल हूँ, वजी फारूकी हूँ, सलीम शेख हूँ, कामरान खान हूँ या फिर कोई भी हो। कल बड़ा जबरदस्त डांस किया था जीते के बाद और ऐसे अभी ये वार्म अप हो रहे हैं। मैच अगर ये जीत पाती है यहाँ पर लाहौर हीरोज की टीम, तो यकीनी तौर पर इन्होंने जो है वो सेलिब्रेशन के लिए अपने कुछ स्टाइल महसूस जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं। ईमो समेत सब जो है इस वक्त कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, साद रशीद आए हैं बैटिंग करने के लिए और जैसे मैं बात कर रहा था, मेरे पर्सपेक्टिव से आज मुझे ये ट्रेंड टूटता हुआ दिख रहा है। इस्लामाबाद वॉरियर्स पहले खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि लाहौर जिनकी बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है वो आज ये रन चेस कर जाएंगे। और आज इस लीग का DCL T10 का ये जो फॉर्मेट चलता आ रहा है कि पहले बैटिंग करें, टॉस जीते और मैच भी जीते, वो आज टूटेगा। जी बिल्कुल साइम, लेकिन ये खेल है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन एक बात जहन नशीन कर ले कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। यहाँ पर लोस जो टारगेट है उस पर भी हमने देखा है कि टीमें जो है वो डिफेंड करने में कामयाब हुई। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अब तक 8.3 ओवर्स में 80 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। साद रशीद इस वक्त स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक करंट पर आसिम महमूद। कामरान ने अब तक 1.3 ओवर में 14 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया हुआ है। इस ओवर की बात करें तो 1 रन उन्होंने अब तक दिया है। साइम आउटसाइड लास्ट में गेंद और इसको खेलना चाहते थे लेकिन बीट हो गया और गेंद अरसलान की ग्लव्स में जा पहुंची। जी बिल्कुल, पिंडी के क्राउड से और पिंडी के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आज म्यूजिकल नाइट भी होगी और आज के दिन बड़ा फाइनल भी कराची फाइनल में है। आइए मैच को एंजॉय। और इसी में बड़ी अच्छी बॉल करवाई थी और थोड़ा सा बॉल को राह दिखाई 1 रन के लिए। दूसरा रन लेना जरूर चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बैट्समैन ने मना किया। तो मैं बात कर रहा था जावेद, पिंडी के क्राउड की, आप भी यहाँ के रेजिडेंट हैं, तो पिंडी का क्राउड आज आना चाहिए इस मैच को एंजॉय करने के लिए, म्यूजिकल नाइट को एंजॉय करने के लिए। एक बड़ा मौका है पिंडी के पास। बिल्कुल साइम, और जितने भी इस वक्त रावलपिंडी के इर्द गिर्द गिरतो नवाज से ताल्लुक रखने वाले जरूर आएंगे। यहाँ पर बड़ी हिट लगाना चाहते थे, आसिम जो है वो जल्दबाजी कर रहे हैं और उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कामरान बड़े जबरदस्त अंदाज के साथ बॉल कर रहे हैं, बॉडी से अवे खिला रहे हैं, बैट के बिल्कुल करीब से बॉल नहीं जाने देते क्योंकि वो जानते हैं कि जहां कहीं भी मैंने थोड़ी सी गलती की अपने लैंड और लेंथ को, तो वहां पर बड़ी हिट लग सकती है। बड़ी जबरदस्त शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा कामरान की जानिब से, जिन्होंने 2 ओवर में 15 रन दिए हैं और 2 विकेट भी हासिल कर रखी है। इसी के साथ 9 ओवर्स का हुआ इख्तिताम और इस्लामाबाद वॉरियर्स 81 5 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, Deconcepts प्रेजेंट सेलिब्रिटी लीग T10 पावर्ड बाय 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज और दूसरा सेमीफाइनल इस्लामाबाद वॉरियर्स बमुकाबला लाहौर हीरोज। और बिल्कुल पिंडी का ये स्टेडियम और आज की ये खूबसूरत शाम पिंडी के लोगों के नाम और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से जो लोग जो सुपर पर लाइव देख रहे हैं ये एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल अपने सेलिब्रिटीज़ को देखते हुए, क्रिकेट खेलते हुए। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे, एक घर के अंदर जब एक रिमोट होता है तो एक मैच और एक ड्रामा, लेकिन आज दोनों चीज़ें एक ही स्क्रीन पर। यहाँ पर अच्छी गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, मोहसिन की गेंद जिसको क्रॉस ऑफ द लाइन खेलना चाहते थे साद, लेकिन हुए नाकाम। और मोहसिन ने खुद इस गेंद को फील्ड किया, खुद दौड़ते हुए किया और इस गेंद को हासिल किया।
तो दूसरे ओवर की उनकी इनफरादी तौर पर दूसरा ओवर है, अब तक उन्होंने 7 गेंदों पर 4 रन दिए, क्योंकि विकेट लेस है, लेकिन बॉलिंग इकॉनमी बहुत शानदार है। मोहसिन दराज कद के और बड़े सेंसिबल बॉलर है, बड़ा सोच समझ के अपना गेंद जो है रिलीज करते हैं। उनको पता है कि इस वक्त साद जो है रशीद उनके खिलाफ बड़ी हिट लगाएंगे, तो बड़े ज़बरदस्त लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं साइम। अच्छा बॉल डाउन द लेग साइड, इस बॉल को स्लो रखना चाहते थे, थोड़ा लो रखना चाहते थे, लेकिन बॉल अनफॉर्चुनेटली लेग स्टंप से बाहर गई। अंपायर ने कहा ये वाइड बॉल है, एक और एक्स्ट्रा का इजाफा। आसिम पहुंचे 3 पर, साद 1 पर। आखिरी ओवर बड़ा क्रूशियल ओवर। अगर 100 रन 110 एक्स्ट्रास की बात करें तो 20 एक्स्ट्रास, 2 नो बॉल, 17 वाइड्स, और ये बहुत क्रूशियल है। और यहाँ पर एक बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, बड़ी अपील कीपर्स की जानिब से, और मुझे कीपर बड़े कॉन्फिडेंट लगते हैं हर बॉल पे। जो बॉल उनके ग्लव्स में आता है वो अपील करते हैं, और ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव साइन है। बॉलर और टीममेट्स को भी साइन इसके साथ देना चाहिए। और इस्लामाबाद वॉरियर्स के स्टैट्स की बात करें, 2 छक्के 7 चौके, तो बड़ा अच्छा रहा। बिल्कुल, अब की बार एक बार तो फिर बड़ी हिट, और जो सिंगल हमने देखा था वाइड की सूरत में सैम, तो ये प्लानिंग हो सकती है मोहसिन की कि उनको वो लेकर आना चाह रहे थे आसिम महमूद को, जो बड़ी हिट लगा रहे, लेकिन उनके बैट और बॉल का आपस में टकराव नहीं हो पा रहा। 7 को उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड पर बुलाने के लिए ये हरकत की होगी, एक मतअमली की होगी, जिसकी वजह से आपने देखा आसिम का बल्ला कहीं, सर कहीं, बॉल कहीं। बड़ी हिट लगाना दिल से तो चाहते हैं, लेकिन लग नहीं पा रही अब तक। शॉर्ट बॉल करवाई, मगर ये चेंज ऑफ पेस देखिए। इस बॉल से मुझे याद आ गई वो डेल स्टेन की जो बॉल उन्होंने करवाई थी, और बड़ी खूबसूरत ये बॉल, और समझ नहीं पाए, ड्रिफ्टर करवाना चाहते थे, थोड़ी सी बॉल स्विंग हुई, लेकिन आसिम महमूद समझ ना पाए, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बैट्समैन भी चांस बिल्कुल नहीं देंगे। यह बॉल देखिए ऊपर से नीचे की तरफ पड़ता हुआ बॉल, और बिल्कुल स्टॉप किया, और बैट्समैन के लिए कोई चांस नहीं था खेलने का। साइम आजकल शॉर्ट फॉर्मेट में बड़ी वैरायटीज बॉलर के पास भी है, बैक ऑफ द हैंड, कैरम बॉल, ऑफ कटर, लेग कटर, स्लो वन, बहुत सारी वैरायटीज मौजूद हैं, और उसी का इस्तेमाल करते हुए आपके बाहर इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के रीजन में। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं है, गेंद गोली की मारने बाउंड्री से बाहर, 4 रन के लिए। काफी देर के बाद एक चौका हमें दिखाई दिया, ये इस टूर्नामेंट का 145वां चौका है साइम, जो अब तक सेकंड सेमीफाइनल में अभी लगा है। जी बिल्कुल, मिड विकेट की बाउंड्री की जानिब बस शॉट को खेलना चाहते थे, लेकिन शॉट गई स्क्वायर लेग की बाउंड्री की तरफ, और 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। फील्डर के पास वहां चांस जरूर था, लेकिन बॉल उनके पास से निकल गई। अब मोहसिन ने बड़ा अच्छा ओवर करवाया है, कोई शक नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ 7 रन इस ओवर में दिए। आसिम के पास आखिरी बॉल, क्या करते हैं आखिरी बॉल में, चलें देखते हैं। बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, और देखते हैं बॉल, थोड़ा सा शॉट, और 2 फील्डर्स वहां पर थे मौजूद, और आसानी से उनके हाथ में। इस तरह से 10 ओवर्स का हुआ इख्तिताम, और इस्लामाबाद वॉरियर्स की टीम 99 रन, 5 विकेट। बिल्कुल जी, 89 रन बन चुके हैं, 90 रन का टारगेट है, और 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं, उनके इस वक्त खूबसूरत लोगो जो है वो ग्राउंड में नस्ब किए गए हैं। और इसके साथ साथ आज के दूसरा सेमीफाइनल, जिसकी पहली इनिंग का खिताब हुआ, इस्लामाबाद वॉरियर्स की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 10 ओवर में 89 रन बनाए। 90 रन का टारगेट है लाहौर हीरोज़ के लिए, जिनकी कप्तानी कर रहे हैं सलीम शेख, जबकि इस्लामाबाद वॉरियर्स के कप्तान हैं मोहम्मद राना। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि 10 ओवर का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है, इस मैच की पहली इनिंग मुकम्मल हो चुकी है। 90 रन का टारगेट है। क्या समझते हैं साइम, क्या ये चेज हो जाएगा या कि डिफेंड कर लेंगे? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से बैटिंग फ्रेंडली पिच हमने देखी यहाँ पिछले कुछ मैचेस में, और यहाँ आज ट्रेंड चेंज होता हुआ भी मुझे दिख रहा है, और आज मुझे लगता है कि ये चेंज ज़रूर होगा। ट्रेंड इस्लामाबाद वॉरियर्स Deconcepts सेलिब्रिटी लीग, मिर्जा जैन बेग आउट हुए, 6 रन बनाए, आसिफ अली 39 रन बना सके, आगा शराज 0 पर, रिजवान अली 11, अरबाज खान 3, आसिम महमूद 9, और साद रशीद 1। तो आसिफ अली के अलावा कोई भी बैट्समैन खातिर खा परफॉर्मेंस ना दे पाया। टोटल 89, 5 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर में, और एक्स्ट्रास 20। तो ये एक बड़ा क्रूशियल स्टेज, और इसमें एक्स्ट्रास को करना पड़ता है आपको कंट्रोल, अगर आपको जीतना है मैच। लेकिन इस्लामाबाद वॉरियर्स की टीम कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस आज ना दिखा पाई, और ट्रेंड मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है।
अगर आप बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें लाहौर हीरोज की, तो मोहसिन आवान 2 ओवर 12 रन 6 की इकॉनमी, अरसलान फैसल 2 ओवर 28 रन 2 विकेट्स 14 की इकॉनमी, मुराद हैदर 1 ओवर 10 रन और 10 की इकॉनमी, वजी फारूकी 1 ओवर 13, इमरान इम्मू 2 ओवर 10 रन 1 विकेट और 5 की इकॉनमी, कामरान खान 2 ओवर 15 रन और 2 की इकॉनमी। इमरान इम्मू मोस्ट सीनियर बॉलर थे और आज दिखा भी दिया अपना एक्सपीरियंस। पहली विकेट 8 रन पर गिरी थी, उसके बाद कुछ खातिर का परफॉर्मेंस या आप हाइलाइट्स देखिए। पहला बॉल शॉट करवाया था, इसे थोड़ी सी राह दिखाई, बॉल गई फाइनल लेग से बाहर 4 रन के लिए। फिर एक बड़ी शॉट खेलना चाहते थे और बोल्ड हुए इस गेम पे इस्लामाबाद वॉरियर्स के बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आगा सलमान आज को खातिर का परफॉर्मेंस ना दिखा पाए और लगातार दूसरी गेंद पर आउट हुए, उन्हें भी बोल्ड किया और डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर रजवान बड़ी शॉट खेलने के लिए डाउन द ग्राउंड गए, थोड़ी सी परफॉर्मेंस में आसिफ अली ने जान डाली, ऑफ स्टंप के ऊपर ये शॉट खेला, छक्का लगाए, कुछ अच्छी इनिंग्स खेली। 39 रन आज उनकी इनिंग्स में शामिल थे, लेकिन उनके साथ कोई बैट्समैन ना साथ दे पाया। आप शॉट देखें, लेट का शॉट पॉइंट के फील्डर के बीच से ये खेला था, ये भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, वजी फारूकी बॉलर थे उस वक्त, आसिफ अली अच्छी कुछ शॉट्स खेली और मगर इमरान इमू बड़े ही एक्सपीरियंस बॉलर, बोल्ड करके रख दिया रिजवान अली को और उसके बाद अच्छी बॉलिंग करवाई। ये ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशल ओवर था, अरबाज खान की विकेट हासिल की, उसके बाद बड़ी शॉट खेलने के लिए आसिफ अली गए और छक्का लगाया। फिर बड़ी शॉट खेलने के लिए डाउन द ग्राउंड गए थे और चौका गया था। फिर स्लो शॉट बॉल करवाई थी आसिफ को, लेकिन उसे खेल ना पाए और मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे जिन्होंने आसानी से कैच लिया। तो पहली इनिंग्स का हुआ इख्तिताम, इस्लामाबाद वॉरियर्स व मुकाबला लाहौर हीरोज। लाहौर को जीत के लिए 90 रन का हदफ दिया। लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे दोबारा से सेकेंड इनिंग्स में। This DCL T10 is brought to you by Deconcepts and 5G Group of Companies. It's all about real estate.
DCL T10 is brought to you by Deconcepts and 5G Group of Companies. It's all about real estate. Good evening and welcome back, everybody. This is live from Pindi Stadium. It's Deconcepts Celebrity T10 League, presented to you by 5G Group of Companies. This is the second semi-final today. It's between Islamabad Warriors and Lahore Heroes. And the big news is that Islamabad Warriors batted first and set a target of 90 runs for Lahore Heroes to chase down and win this semi-final. Whoever wins this game will be playing a final later tonight with Karachi Royals. With me in the comm box, I have Numan. How are you, Numan? And what do you say about this game? Thank you, Hijab. Really excited for the second innings of the second semi-final. Islamabad up against Lahore. The target is 90. It's a modest total. I don't think so that Islamabad Warriors, they have given up. Have a good bowling lineup, a spirited fielding attack as well. They'll be really looking forward to defend this total. And on the other hand, Lahore Heroes, they have a good batting lineup. They're on the verge of winning the third game of the competition. They have won 2 out of 2. Remember, Karachi Royals have already qualified for the final of Deconcepts Celebrity T10 League, powered by 5G Group of Companies. Well, Lahore Heroes is now a very formidable side, and a target of 90 is not a target that we would generally say is unachievable. But Islamabad Warriors will have to work very, very hard in the field and will have to be very accurate with their bowling to defend those precious 90 runs. Because like we've told before, this is a knockout game. Whoever wins this progresses straight to the finals. Yes, exactly. And just for our viewers, this is the 7th game of the competition. And by now, we haven't seen a game where the team have won while chasing the target. So this might well be the first time where Lahore Heroes, they have an outside chance to win the game while chasing the target. And then again, we haven't seen a target below 100 runs too. So that's another, the first time thing that we're seeing here in the Concepts League. And this has been a very entertaining lead. We call it the cricketainment because you see all the celebrities from the entertainment industry now entertaining you with their cricket skills live in the Pindi Stadium. And we have crowd incoming now. So we're going to have the final game later tonight. We're expecting a huge crowd, and then we'll have some fun with the music festival that is planned. Really looking forward to all the musical activities, but currently Saad Rashid, he'll be looking forward to get some wickets early on, especially Daniel Arshad. He looked in form, scored a brilliant 47 in the first game of the competition against this bowling lineup, against Islamabad Warriors. So he'll be looking forward to get some runs early on, but Saad Rashid, he has a responsibility on his shoulders, need to get early wickets with the new ball. Saad has been the go-to bowler for Islamabad Warriors. We have seen him being the pick of the bowlers, and Mohammad Rana trusts him a lot. Mohammad Rana is captaining Islamabad Warriors, and he was pretty sure at the time of the toss that he will set a target for Lahore Heroes. That'll be hard to chase, so let's see what happens here. We are just a few moments away from the very first ball of the second innings, and it's all happening live here in Pindi Stadium. Saad Rashid just maneuvering his troops. Now he's going to be operating from the pavilion end. The first ball of the chase, 90 to go in the 10 overs. Lahore Heroes up against Islamabad Warriors in the second semi-final. Slightly down the leg side, a good take by the wicket-keeper. Seen in the first innings as well that the ball has struggled with the line and length, especially with the new ball. So wide to start off the innings for Lahore Heroes. We have seen in the first innings, Naman, that there was quite a bit of movement with the new ball for at least the first 2 or 3 overs. That's where Lahore Heroes got most of their wickets as well. And that really cost Islamabad Warriors the game. So if Islamabad Warriors can get those early wickets in the power play, maybe this can get a bit more interesting. Again, slightly down the leg side, and this time keeper could not stop that one. You got to wait for the umpire signal. That's 5 wides given, so not a good start from Saad Rashid. Well, it's all happening here in the Pindi Stadium. We are yet to have a legitimate ball, but Lahore Heroes have already scored 6 runs. So again, have a look at that. Down the leg side, went away from Daniel Arshad, but the keeper,
He did a valiant effort, but could not stop the ball. So it's a 5 wides given. They yet to have a legitimate delivery, but 6 runs on the board already. Daniel Arshad and Salman, the opening batters for Lahore Heroes. Oh, flicked away. That's a brilliant start. That has gone all the way over the square leg fence for a massive 6. That is the 90th 6 of this tournament, and what a good looking 6 that was. It came off of the bat of Daniel Arshad. It was onto the leg side. He flicked it towards the mid-wicket boundary, and what a beautiful shot that is. An immaculate timing from Daniel Arshad there. A brilliant start from Lahore. Saad Rashid once again straying down the leg side. You got to control your line and the length, especially when you're chasing a target, defending a target of 90. Saad needs to make a comeback. Islamabad Warriors looking for wickets early on. Brilliant delivery. Sam, a good comeback. And Daniel Arshad seems like he's a seasoned campaigner. Scored a 47 in the first game. He has been the key batsman for Lahore, and he has quite a presence in the field as well, I've seen. So a huge, huge responsibility on his shoulders today, because this is a knockout game. Whoever wins this progresses to the final and one step closer to that brilliant trophy. Oh, once again trying to heave that one. This time change of pace, a little bit of pace off the ball, and no pace to work with for Daniel Arshad. The attack and the approach is quite simple. They are attacking from the ball 1. Absolutely. A swing and a miss from Daniel there, and I would say that after that 6 towards the leg side, this has been a brilliant comeback in the over. We've got 2 dot balls now from Saad Rashid. Halfway through the first over, and we've already got 12 runs on the board. Once again picked up very nicely. No chance for the fieldsman. And once again through the square leg fence for a boundary. So Daniel Arshad seems like he's in a bit of hurry to finish the target. Oh, absolutely. And it seems like his game awareness is on point. He knew where the ball was going to pitch up. He was ready for it, and he knew there was no fielder towards that square leg boundary. So he knew that there he's not risking anything. Brilliant 4 from Daniel there. A 16 on the board already for Lahore Heroes. They're looking in a hurry to finish this. Just to remind our viewers, we have a final followed by the semi-final number 2. Karachi Royals have already qualified for the final. Seems like Lahore Heroes are cruising towards that second semi-final slot. Fuller played with the straight bat. No chance for the fieldsman. The ball will go across the long on fence for yet another boundary. Yet again, a brilliant shot from Daniel. He's facing his 5th ball, and this is his 3rd boundary now. He's played it with a straight bat, and he put a lot of power in that shot. The ball races away to the boundary, and that adds another 4 runs for Lahore Heroes. And Daniel is now on 14 from just 5 deliveries. Very expensive over for Saad Rashid. Can he finish the over on a higher note? Good delivery, flicked away. There was a chance for the fielder at short fine leg. Once again, some sloppy fielding effort, but a boundary concludes the first over. 24 for the loss of no wicket, Lahore Heroes.
We are live here from the Pindi Stadium. This is Deconcepts Celebrity League T10 second edition, powered by 5G group of companies. And what an entertaining series we're having here. This is the second semi-final, the knockout game. It's Islamabad Warriors versus Lahore Heroes. Islamabad batting first, set a target of 90 runs for Lahore Heroes to chase, and Lahore Heroes are off to a very good start here. Then we'll operate from the media center end. Wickets are all required for Mohammad Rana and his boys. They're only defending a target of 90. Wickets early on in the power play, something that might just open up the gate for Islamabad Warriors in the game. Out towards mid-off with the straight bat. Good fielding effort this time from Arbaz. Zain Beg has been a key player for Islamabad Warriors. He did not get going when it came to batting. Let's see what he can do with the ball. And pretty straight one. And that's given as an out. Oh my God. That was surprising. Mirza Zain Beg, there was no enthusiasm. There was no passionate shout. But umpire's decision is out. It's been given, and Mirza Zain Beg has gotten the breakthrough for Islamabad Warriors. I wonder why there was no appeal. That was a brilliant delivery. It was a sharp turner, and seems like quite obviously there was no inside edge and some complaining going on. Obviously, have a look at that. This one was a very good delivery. It pitched in line and there was no bat involved, and this just going on to hit the middle leg stump. I don't see the reason why he wasn't complaining. And look at the wicket keeper. He was shouting. He knew that was definitely out. Salman Faisal out for a dark second ball. Mirza Zain Beg with the strike. Mirza Zain Beg gave up too quick. There should have been a more enthusiastic shout there, but nevertheless, he's got that breakthrough for Islamabad Warriors. He looks absolutely dejected, saying some words underneath his lips. I don't think so. We can do a lip reading for that. 24 for the loss of 1 wicket. We're into the second over. New batsman in for Lahore Heroes is Kamran Khan. He has been a very, very important player for Lahore Heroes with the bat and with the ball. He bowled phenomenally today as well. So let's see if he can take up that responsibility to chase down this mighty target of 90 runs. Yes, exactly. And talking about both of these batters in the middle, these two have been a very experienced players for Lahore Heroes throughout this tournament. They need to stay till the very end to take this side over the line. But now Islamabad Warriors, since they got in the first wicket, they have a chance to get another one. So we might see the game being opening up for both of these sides. 24 on the board already. You got a field for Islamabad Warriors. The score is not this is not a massive total. You are defending a target of 90. You need to be very accurate with your line and length. You need to be very accurate with your fielding efforts as well. But currently, the golden boy, Mirza Zain Beg, has struck gold for Islamabad Warriors. Played with the straight bat down to the fielder at mid-off. And currently, we are seeing some enthusiasm from the fielders, a close-in fielders. There's a ring of fielders on the offside. Exactly, as you can see, the ring of fielders on the offside. Point, cover and extra cover. Played with a straight bat. Chance for Zain, but he could not catch that. Straight down the ground for a boundary. Well, that boundary just ruined a pretty good over for Islamabad Warriors. But this is Kamran Khan again being the hero for Lahore Heroes. Well, that rhymed. So a pretty good over so far from Mirza Zain Beg, except for that boundary in the last ball. The equation is that Lahore Heroes need 62 from 50 balls, and that seems a pretty mundane task. But this is T10, ladies and gentlemen. You never know what is going to happen, so stay tuned. A wicket
or two here and there might just change the context of the game for Islamabad Warriors. We're really hoping for a scintillating contest because we have a good number of crowd in for the final. Remember, we have the musical event as well, followed by the second semi-final, and followed by the musical event. We have the grand finale. Karachi Royals have already qualified for the final. They are waiting very eagerly for the next finalist. Mirza Zain Beg continuing from the media center end here. Kamran Khan will be facing Zain Beg, and he picked it up, played it across the line and launched it for another 4. So 2 consecutive boundaries. And that pretty neat over is now looking a bit more rough here for Islamabad Warriors. This is brilliant cricket from Kamran. Whenever you get a bad ball, you need to put that away. Have a look at that. This was right in his slot. He made full use of that, full extension of the arm. No field spin was there at the deep mid-wicket area. A boundary takes a total to 32 for the loss of 1 wicket. And we might be having a little bit of azan break in the middle. We're having, asking for a bottle of water as well. But yes, you got to give them a little bit of margin because it has been very hot and humid out there at the Rawalpindi Cricket Stadium. These people are heroes because they're playing in such tough conditions. But you have to give it to them, considering everything. They have been so committed to this league. And whoever wins today, you know, Islamabad or Lahore, they'll be very deserving of that spot in the final. They have both been excellent teams, and the squad has been very full of commitment and love for this game. And that is wonderful to see. This is the festival of cricket, the most important festival in our country. Nothing beats Pakistani's love for cricket, hunger and the following for cricket. It's just amazing. We have seen it the last night, and the game continued till 2 a.m. and there were people in the ground, there were people watching the game back home. So it's just about the passion for the game that never dies. Remember, it's somewhere around 40 degrees right now at the Rawalpindi, but people, they are at the stadium waiting for the game to continue, supporting their stars, enjoying the cricket out there. And wherever you are, whether you are at homes or outside, do not forget to keep yourself hydrated. This is the weather, it's a killer. So keep yourself hydrated, keep healthy, and keep supporting cricket in Pakistan. I'm going to ask you, Hijab, the number of glasses of water that you should take during this summertime, because it's very hot, it's very humid. How many glasses of water did you ask? I don't know. I don't count the glasses of water, but I do count those bottles that I have. So I think I go through at least 10 of those. So yeah, I keep myself very hydrated because I get dehydrated very quickly. So that's why it's so important to remind everybody. You know what? Go get yourself a glass of water, everyone. Yes, exactly. And talking about the first innings, 90 runs is the target for Lahore Heroes. They're off to a great start. And talk about the first innings, have a look at how the innings has been for Islamabad Warriors. They lost a wicket early on. That was Mirza Zain Beg playing across the line to a straighter delivery followed by Agha Shiraz. That was a wonderful delivery. Ball of the tournament for me, Agha Shiraz. He played all over that shot, and then some recovery for Islamabad Warriors. Rizwan came in and batted beautifully. He was supported by Asif Ali on the crease, and both of them, they had a pretty decent but pretty short partnership over there. Played some beautiful shots across the ground, beautiful placement and beautiful timing. Yeah, Asif Ali, he was in hurry to score some runs, but look at Imran Himu. I mean, he has been the pick of the bowler for Lahore Heroes, also along with Kamran Khan. Some pace off the ball, that has been the go-to thing for Lahore Heroes. Seems like they just picked up the lesson from the 2 games they have played at this very venue. I personally loved how they mixed it up. The variety of bowls, the pace off, pace on, the yorkers, the full tosses. We are seeing a lot of variety here. And we're back with Mirza Zain Beg bowling to Kamran Khan, and he plays this across the line one more time, and this is a mighty hit straight into the stands for another 6. Well,
the Azan break did not bring any change to the fortunes of Islamabad Warriors. The day continues to get worse for them. 2 overs are done, and have a look at that. This was right in the slot. It was a half volley, and he made full use of that. Once again, extension of the arms. Once again, down to the mid-wicket fence. That was a huge hit right at the stage of the inclusion. So with the over conclusion, 2 overs are gone. 38 for the loss of 1 wicket. Lahore Heroes, and that's a beautiful Rawalpindi Cricket Stadium on the eve of the semi-final night. Azan breaks out. This is the Deconcepts Celebrity League T10 powered by 5G Group of Companies. Second semi-final between Islamabad Warriors and Lahore Heroes. Both teams are fighting hard for that spot in the final against Karachi Royals, who have already qualified and are waiting for that final game and waiting for that beautiful trophy. Saad Rashid continuing here, and that was a good delivery. Daniel Rashid wasn't sure where to play that one, so he just thought, I'll leave this one to be safe. Daniel was in 2 minds to play that ball, and on your screen you're seeing Zaman Khan, one of the very impressive bowlers in this tournament so far for Islamabad Warriors. I wonder when we are going to see him operate for Islamabad Warriors. They need wickets, and they need not only a wicket, but they need 3 or 4 quick wickets to get back in this competition. Saad Rashid, another good delivery. This is a wonderful start from Saad Rashid, some swing off the surface. We saw this in the first innings as well. The first 2 or 3 overs, there was a bit of movement from the surface, and we haven't really seen that in the previous games. So that was a bit of a surprising element in today's game for both the teams. And Daniel Rashid just in 2 minds right now, wanting to play that shot. Another good delivery. Oh, how did this miss the stumps? That was a wonderful delivery. It was a slide inside edge, and I was wondering, how did this just miss the middle stump? I am biting my teeth here. I don't know how that missed the stumps. But my goodness, Saad Rashid has pulled back brilliantly after that first over. He went for 24 runs, but now he's gone for 3 consecutive dot balls. For me, that's a pretty good follow-up. Brilliant recovery from the left-arm pacer for Islamabad Warriors. They are looking for wickets right now, and Daniel Arshad currently seems like he's confused. It's all over the place from the first 3 deliveries of Saad Rashid. Is continuing. Another good Yorker. Once again played with the straight bat. This was kind of a change of pace, so he's mixing it up very nicely. First 2 were the fuller balls, followed by a full toss, and the third one once again right outside the line of off jump. So good comeback from Saad Rashid and Islamabad Warriors. There is some good support from his teammates there for Saad. I see people coming up to him after every single ball, appreciating him. 4 dot balls here, 4 consecutive dot balls here from Saad Rashid. Can he finish this over? Quite done and neatly. We'll just have to see. 2 balls to go. Oh, that one is outside, way outside off stump. And that one is going to be called a wide. You gotta call it the commentator's curse. We were praising him the way he was so brilliant in his second over. This takes the extras total to 7. Well, he deserves the praise. I cannot not praise him. So obviously he's pulled back brilliantly, brilliant recovery, but there was that wide. So let's see what happens in the next 2 balls. If Saad can somehow get through this over without a boundary, I'd call that a success. Oh, full toss. That has to be a no ball. You gotta wait for the signal. Yeah, exactly. That is a no ball. It just came out of his hand, and you gotta feel for the bowler as well. Everyone is the part of this contest because it's very hot, it's very humid, and sometimes you just cannot grip the ball. Have a look at that. It just came out of his hand and way above the waist height.
Thankfully, no damage done to the batter. No ball given from the square leg umpire as well. Saad Rashid slightly not controlling the ball. Yeah, that could have been a bit nasty, but this is a free hit now. So let's see what Daniel Arshad can produce from this one. And he wanted to go big, and he plays it towards the mid-off. Mohammad Rana, the captain, fields very well over there. He has been very animated in the field, Mohammad Rana. He has a very good presence, have a smile on his face throughout. That's pretty good to see. Yeah, exactly. And what other thing good to see is the number of crowd in today. People, the families, children, everyone chipped in to support cricket. It's a T10 format, cricket plus entertainment. Deconcepts Celebrity T10 League. It's all about cricket and entertainment. On the back for this time, nicely played. There is some chase for Arbaz. The ball is strolling across the fence. He just made it right at the time to stop the ball. And in the meantime, both of these batters have ampled across for a double. This concludes the over number 3. And it's again before the conclusion of over. Have a look at this replay. A bit of a chase for Arbaz Khan there, but see, the best thing is that he never gave up. And at the end, he was able to catch up with the ball, save that boundary for his team, save those precious 2 runs. Good backup from Asif Ali, and that takes the total for Lahore Heroes to 42 with the loss of 1 wicket at the end of the power play and at the end of the 3rd over. Alright, so we believe the total runs of Lahore Heroes are 42 in 3 overs. 42 in 3 overs. और आपको ये भी बताना चलूं कि पहले मैच के फौरन बाद हम लोग यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट जो है वो देखने वाले हैं. So are you excited for that? तो जोरदार ताली और शोर से बताएं ना. Are you guys ready? All right then, this is the second semi-final between Islamabad Warriors and Lahore Heroes. We are live here in the Pindi Stadium with this festival of cricket. With me in the comm box is Numan, and Numan is feeling the heat now. Yeah, exactly. We're down to the business end of the tournament. It's the second last game, the second semi-final. Mohammad Rana, he wants something out of his bowlers. Seems like he wants a wicket or 2 from this very over, maneuvering his troops. Remember, the power play is over. You can't have more than 4 fielders outside the circle. And now he's sending a fielder back. Talking about the crowd, we have a good amount of crowd in today. The people have chipped in to support the game. Some families, some students, everyone hoping for a fantastic contest. It's the second semi-final. We'll be having an epic encounter the final as well. Karachi Royals have already qualified for the final. You have to give it to the Pindi crowd and to their commitment to the game. It's very, very hot outside, but they're still here and they're still supporting their team and this festival of cricket. So hats off to everyone who's here, and hats off to everyone who's on their way to here, because trust me, it's going to be worth your while. Exactly, and hats off to everyone who's calling the game as well for the last 3 days. It's been a fantastic event, some brilliant cricket we have seen, some brilliant coverage we have seen. So all around, it's just a fantastic event, and everyone has chipped into the maximum to support the game, to support the cause. It's cricket plus entertainment. So right now we have Rizwan operating from the media center end. We have a change of bowler here. As soon as the power play has ended, Mohammad Rana has been seen very animated, trying to place all his fielders in the key places. Beautiful delivery, good start. Rizwan is not letting the bad balls go, and sometimes being a bowler, when you are facing a batter who is this type of experience and who always gets after your bowling, you need to be very accurate with your line and length, and especially you need to operate according to the field. He has 2 fielders on the offside at the fence, so he's just operating with the line right outside the line of off stump. Once again a bit too full at this time, and a wide called by the umpire. You know what, I was going to say that what stands out to me was that first ball wasn't a wide, but then we have the second ball as the wide. But nevertheless, Rizwan Ali is a good bowler, and he's trying his best to produce something for his team. Beautiful delivery. Play and a miss for Kamran. Just a simple action, a simple follow through, but what a lovely delivery. It's just about the length he's maintaining. My goodness, that line and length.
I am seeing some smokes here from Rizwan Ali. That was a beautiful delivery. And Kamran Khan was totally deceived by that one. Oh, beautiful shot that is. There was a gap between the fielder at deep extra cover and long off, and the ball will go across the fence for a boundary. He was waiting for that one, wasn't he? Kamran Khan making no mistake there. A bit of a fuller delivery. And the pitch of the ball, he got the bat to it. Immaculable timing. And the ball races away for a boundary. Once again, right outside the line of off stump, we were mentioning about how he's operating according to his field. He has two fielders on the offside. Rizwan, the number of fielders on the leg side as well. So it's just so good when you operate according to your field set. Rizwan Ali is into his first over, considered only 5 runs up till now. Pulled away very nicely. Once again, the gap was there. A good recovery from the fielder at mid-wicket. Asif Ali making good use there and defending the ball brilliantly. The gap between current rate and required rate is a lot, isn't it? Oh, played that, came outside the off stump, played it beautifully for a maximum there, Danial Arshad. He joins the party once again. And that beautiful and magnificent 6 brings up the total to 54. What a shot that one. That one was in the slot. He bowled a brilliant over, but that one was just a full toss right outside the line of off stump into the batsman's arc. A 6 to conclude the over. 4 overs are gone, 54 for the loss of 1 wicket. Lahore Heroes, and the equation seems very simple now. 36 needed of last 36 deliveries. And the total runs of Lahore Heroes are 52 in 4 overs. Sorry, 54 in 4 overs. We have seen the 4-over games until now. This is Lahore Heroes batting and fighting for that final spot versus Karachi in the final game later today. They have been able to score 54 from the first 4 overs. And the equation is pretty simple now. They just need 36 more runs on 36 balls. A run a ball for Lahore Heroes. They've already lost 1 wicket. And Asif Mahmood is going to be continuing the bowling. And that ball has been beautifully picked up from Kamran Khan towards the mid-wicket boundary. And pretty well fielded there as well. So just 1 run added to the total. We haven't seen Asim bowl a lot for his team this time. So let's see if this experiment works for Islamabad Warriors. Danial Arshad wanted to play that across the line, lost his balance, and the ball goes straight to the keeper. And that one has been called a wide. It was down the leg side. And although Danial moved towards the leg side, it's still been called a wide. Oh, good delivery this time around. Danial Arshad was deceived. He was just expecting the ball to bounce a little more, but seems like this is a trump card the Mohammad Rana wants to play. Ah, big shot. That is a huge hit. Fielder was placed. Zain, and he has dropped that one. It was a high ball. Chance was created, but Zain Mirza could not grab that one. You cannot do that. When you're defending just 90 runs, you cannot do that. Come on, Zain. You have been the golden boy for Islamabad Warriors. And I know there's a lot of light out there with the floodlights. It's hard to get those catches, but that one seemed pretty straight to me. That's a shame. Not easy
easy to grab those catches under lights. Good connection from Kamran. This time straight to the fielder. Yet another drop catch. Zaman was a culprit this time. And when you're defending a small total, you need to take the opportunities provided to you by the batters. Oh, you gotta feel for Asim Mahmood. He could have had 2 wickets in 2 balls, but now he has a boundary on this ball. Kamran picked it up beautifully. And it might have just gone the distance, but there was a fielder there, and there was a chance for that catch, and that would have been a brilliant catch from Zaman. Could not get a hold of that one, and that's a bit of a downer for Islamabad Warriors. Only 27 more to come. Dances down the track, and this time the keeper missed a straightforward stumping chance. This is not a good day for Islamabad Warriors. Well, what can I say? This has been, Asim Mahmood has been very, very unlucky in this over. No support from the fielders whatsoever, and no support from the wicket keeper as well. Time drilled down the ground. Zaman will cut the ball off. Only a single. The only thing that we missed in this over was a run-out chance. Otherwise, we have seen all sorts of entertainment in the over. 5 overs are done and dusted. 64 for the loss of 1 wicket. Only 26 more to go from 30 deliveries. And the total runs of Lahore Heroes are 64 in 5 overs. 64 in 5 overs. और हम लोग क्या देख रहे हैं आज तो माशाल्लाह काफी सारा क्राउड है और यहाँ पे तो कुछ लोग जो है मिकासा मार्केटिंग से भी है ना आप लोग सारे. चलिए देखते हैं फिर शोर आएगा तो पता चलेगा. चलो तो जी के नाम सब मिलके इकट्ठे शोर करते हैं. ख़वातीनो हज़रात, आपका करते हैं एक बार फिर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से खैर मकदम। और गेंदें रह गई 30 रन 26, दानियाल 27 पर मौजूद और हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे आप मैच को कर रहे हैं खूब एंजॉय। आज क्राउड हमें दिख रहा है एंजॉय करने के लिए आया इस आखिरी दिन को। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद जावेद, कहते हैं आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया साइम। और बड़ा शानदार रहा मैच गो के अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद वॉरियर्स को एक बड़े टारगेट से रोकने में कामयाब हुई लाहौर हीरोज़ की टीम, जो कि एक बड़ा अगर देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप थी, लेकिन फ्लॉप हो गई। आज बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बॉलिंग का जो है नतीजा। इस वक्त लाहौर जो है एक 90 रन के टोटल का टारगेट कर रही है, उसका ताक़ुब कर रही है, जिन्होंने अब तक देखा जाए तो 5 ओवर में 64 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। आगे हैं जी अब बॉलिंग करने के लिए बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन के बड़े हीरो अरबाज खान को लाया गया है मोहम्मद राणा की जानिब से, और देखते हैं कि ये उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं या कि नहीं। पहली बॉल पीछे पड़ी हुई गेंद थी, हवा में ये गेंद गई, क्या कोई फील्डर नीचे है? बिल्कुल एक और सिटर ड्रॉप कर दिया। टीपू पास मौजूद थे लेकिन कैच नहीं थाम पाए। एक आसान सा कैच जरूर था लेकिन फ्लड लाइट्स का इशू जरूर हो सकता था। चौथा चांस, या बच्ची देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कितनी खूबसूरत और खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा। ये गेंद हवा में गई थी, जरूर बहुत ऊंची थी लेकिन फील्डर जरूर मौजूद थे नीचे। ये आप कैच देख सकते हैं। ओ, खुद को बॉल के ऊपर फेंकना जरूर चाहते थे लेकिन फ्लड लाइट्स में बिल्कुल आसान नहीं था। अब की बार डाउन द लेग साइड और डीप लेग की जानिब खेल दिया है, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन्स के लिए कैच जो ड्रॉप होते हैं साइम, कैचेस विन द मैचेस। तो इसी तरह का सिलसिला अगर जारी रहा तो बहुत जल्द लाहौर हीरोज़ की टीम अपने मतलूबा टारगेट तक पहुंच पाएगी। 5.2 ओवर 69 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और शाकीन क्रिकेट ऐसी बाउंड्रीज का जो है वो भरपूर जवाब देती है, क्लैप करके शोर करके। इस वक्त सलाम मशवरे जारी। जमान खान और विकेट कीपर राशिद जो है कुछ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक स्टंप भी मिस किया। एक बहुत बड़ा चांस था। इस वक्त दानियाल 17 गेंदों पर 31 रन के साथ स्ट्राइक पर मौजूद है। एक बार फिर से पीछे पड़ी हुई ये बॉल थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप इसे करवाना चाहते थे। बॉल थोड़ा बाहर की तरफ जरूर निकली लेकिन गाइड किया दानियाल ने फील्डर के हाथों में। दानियाल पहुंचे 31 पर, 18 गेंदों का उन्होंने किया सामना। इस तरह गेंदें बाकी 27 रन चाहिए 21। यहाँ पर लेग साइड की जानिब गेंद और इसको डीप कर लेग की जानिब उठा खेल दिया है। बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरी है ये गेंद, लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ड्रॉप उसके करीब गिरी। और इशफाक चौहान का इशारा कि रन यहाँ पर मिले हैं 4। तो अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहा तो दूसरा सेमीफाइनल भी बिल्कुल बहुत जल्दी इख्तिताम पजीर हो जाएगा साहब।
जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी शॉट खेली थी, बड़ी खूबसूरत ये शॉट थी और मिड विकेट की बाउंड्री की तरफ ऐसे खेलना चाहते थे और एक टप्पा खाने के बाद गेंद की बाउंड्री लाइन से बाहर दानियाल पहुंचे 35 पर। स्कोर इस्लामाबाद हीरोज 73। बड़ा शॉट खेलने का है लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए। टॉप पे जरूर लगा था लेकिन थर्ड मैन के पास से ये बॉल निकल जाएगी गेंद की बाउंड्री लाइन से बाहर और 77 पर 1। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। इस वक्त दानियाल के जो है उन्होंने अब तक 20 गेंदों पर 29 रन बनाई। आउटर एज हुआ, फील्डर को शॉट थर्ड मैन पर मौजूद थे, उनके सर के ऊपर से ये गेंद थर्ड मैन बाउंड्री को क्रॉस कर गई और इस तरह स्कोर जो है उसमें मजीद 4 रन का हुआ इजाफा। इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो उसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया। पिशावर टाइगर, रावलपिंडी स्टार, कोयटा मार्को और इस्लामाबाद की टीम, वॉरियर की टीम इस वक्त ग्राउंड में मौजूद। आगे पड़ी हुई गेंद लॉन्ग ऑफ की जानिब खेल दिया है, डीपर फील्डर मौजूद लेकिन बेबासा गेंद उनको चकमा देती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। देखिए आज का दूसरा सेमीफाइनल और जो बात में कल कर रहा था, 24 बॉलें 9 रन बाकी और लाहौर हमें दिख रही है फाइनल में। हैशटैग खेल तो अब होगा 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स और खेल हो रहा है। एक तरफ कराची पहुंच चुकी है फाइनल में, 6 ओवर का हुआ इख्तिताम 81 पर 1। जी बिल्कुल, कराची रॉयल्स की टीम कल उन्हें पेशावर टाइगर को शिकस्त दी। आगे पड़ी हुई गेंद थी, गो के फील्डर भी अब हिम्मत हार चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि अब ये खेल उनके बस से बाहर है। 81 रन है, 36 गेंदों पर 81 रन बन चुके हैं। 90 रन का टारगेट है, मजीद 9 रन दरकार है। 24 गेंदों पर कामरान, 14 गेंदों पर 28, जबकि दानियाल 21 गेंदों पर 43 रन के साथ विकेट पर मौजूद है। जी बिल्कुल, स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद ये क्राउड जो कि एंजॉय कर रहा है रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर और सेलिब्रिटीज के इन मैचेस को खूब एंजॉय कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप 24 बॉलें 9 रन्स बाकी हैं, 6 ओवर्स 81 पर 1। तो एक आसान सा हदफ दिख रहा है लेकिन क्रिकेट है, बाय चांस गेम है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्राउड की जो एंजॉयमेंट है और क्राउड हमें दिख रहा है कि आज रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर आया है और दानियाल 43 रन पर मौजूद, 21 गेंदों का उन्होंने किया सामना और एक बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेली, आज ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली। और उनके साथ मौजूद कामरान खान स्ट्राइकिंग एंड पर। देखिए आसिफ महमूद की बड़ी अच्छी गेंद और पहला ओवर बहुत अच्छा करवाया था, चांसेस बनाए थे अपनी टीम के लिए, कैचेस मिस हुई, रन आउट मिस हुआ, लेकिन एक बार फिर से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपना दूसरा ओवर लिए आए हैं। बड़ी अच्छी बॉल करवाई, पहली बॉल को लो रखा, थोड़ा ड्रिफ्टर करवाना चाहते थे और काफी हद तक कामयाबी हुए। आउटसाइड लेग स्टंप पड़ी हुई गेंद और इसे पिक किया और भेजा बाउंड्री लाइन से बाहर। टिकट दिया है बॉल को कि जाइए सिटी एंड के बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर बैठ जाइए और इस तरह बाउंड्री मुकम्मल की दानियाल ने। बिल्कुल आगे पड़ी फुल गेंद और वेलकम किया दानियाल ने डीप मिड विकेट के रीजन में। गेंद काफी देर हवा में रही और बल्कि कम कमों में ये गेंद जो है वो दिखाई दिए। शायकीन क्रिकेट भी काफी देर तक इस गेंद को देखते रहे। आपको बताते चले कि इसके साथ दानियाल 22 गेंदों पर 49 रन, जबकि 6.2 ओवर में 88 रन। लाहौर हीरोज की टीम 2 रन की दूरी पर इस दूसरे सेमीफाइनल में कामयाबी से, जबकि 1 रन की जरूरत है दानियाल को। साइम जी बिल्कुल, 2 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए। बड़ा शॉट खेलने के लिए डाउन द ग्राउंड जाना चाहते थे लेकिन थर्ड मैन के फील्डर, जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था, गेंद वहां से निकल गई और इस तरह इस्लामाबाद हीरोज ने किया इस मैच का खात्मा और दानियाल ने मुकम्मल की अपनी 50। बड़ी जबरदस्त मैच हमें देखने को मिला और मैं 7वें ओवर में ये रन्स कर लिया चेज और इस तरह जाना पड़ेगा इस्लामाबाद वॉरियर्स को इस टूर्नामेंट से बाहर। और इसके साथ साथ लाहौर हीरोज की इस जीत के साथ कराची के साथ खेलेंगे अपना फाइनल। जी बिल्कुल, और दूसरी टीम इस वक्त अपना सेमीफाइनल जीतने के बाद जो लाहौर हीरोज की टीम है, जिन्होंने इस वक्त सब्ज रंग की किट पहन रखी है, ग्रीन कलर की, ये बड़ी शानदार इनिंग आज दानियाल की और बहुत ही ज़बरदस्त। जब जहां मौका मिला उन्होंने
किसी बॉलर को खातिर में ना लाए और बाउंड्री लगाने में कामयाब रहे, क्योंकि कुछ चांसेस मिले, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। जी बिल्कुल, लाहौर हीरोज ने मैच जीता और 9 विकेट से मैच जीता। इस्लामाबाद वॉरियर्स जो कि यहाँ की होम टीम भी हम कह सकते हैं, उस टीम को यहाँ पर झटका दिया और सेमीफाइनल जीत कर पहुंचे। फाइनल में खिलखिलाते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ मिल रहे हैं दोनों टीमें, और ये अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और दोनों यहाँ पर टीम्स बड़ी अच्छी टीम्स थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बात करें मोहम्मद राना की, बड़ी अच्छी कैप्टनसी की, उनके साथ जो प्लेयर्स थे उन्होंने प्रॉपर्ली परफॉर्म किया। और अंपायर समझा रहे हैं कुछ यहाँ बॉलर को, आप देख सकते हैं कि ये सलमान है जो कि अपने LBW पर थोड़े से उन्होंने रिएक्ट किया था बहरहाल अब इशफाक चौहान से, जो अंपायरिंग के प्राइस अंजाम दे रहे थे, उनसे कुछ बातचीत करते हुए। बहरहाल अंपायर और यहाँ पर अब ग्राउंड स्टाफ जो है वो ग्राउंड पिच को मजीद जो है वो क्लियर करने के लिए जो है वो ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। So बिल्कुल, लाहौर हीरोज Deconcepts present सेलिब्रिटी लीग T10 powered by 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज। दानियाल अरशद आज के मैच के बैटिंग हीरो, नॉट आउट रहे। 51 पर 23 गेंदों का सामना किया। सलमान फैसल LBW हुए। मिर्जा जैन बेग की गेंद पर 0 रन बनाए। कामरान खान नॉट आउट रहे, 29 रन बनाए, 15 गेंदें खेली और 6.3 ओवर में ये टारगेट किया मुकम्मल, 90 रन बनाए। इस्लामाबाद वॉरियर्स की टीम यहाँ बॉलिंग में साद रशीद 2 ओवर्स 28 रन, 0 विकेट। मिर्जा जैन बेग 1 ओवर 14 रन, 1 विकेट। रिजवान अली 1 ओवर 12 रन, 0 विकेट। और आसिम महमूद 1.3 ओवर 19 रन, गो के काफी चांसेस जरूर बनाए अपनी टीम के लिए। अरबाज खान 1 ओवर 17 रन और इकोनॉमी की 17, 10 एक्स्ट्राज की इनिंग्स में थी और बासानी ये हदफ मुकम्मल किया 7वें ओवर में इस्लामाबाद। जी बिल्कुल, और आज का दूसरा सेमीफाइनल जो खेला गया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, पहला सेमीफाइनल कल खेला गया था कराची रॉयल्स और पेशावर टाइगर के दरमियान, क्योंकि पेशावर टाइगर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन और इस टूर्नामेंट के साइड बड़ी शानदार थी, वो भी तमाम टीम्स की। अगर बात करें रावलपिंडी स्टार्स की बात करें, इस लाहौर हीरोज की बात करें, जी बिल्कुल, ये आप हाइलाइट्स देखेंगे और डाउन द लेग साइड ये गेम थी और इसे पहुंचाया था बाउंड्री लाइन से बाहर। एक बार फिर से लेग साइड की जानिब स्क्वायर लेग की बाउंड्री फाइनल लेग को कवर किया था, फिर से थोड़ा सा रूम बनाया, इस शॉट को खेले बाउंड्री लाइन से बाहर। फिर से दानियाल अरशद बड़ी खूबसूरत यहाँ पर उन्होंने बैटिंग की फाइनल लेग की तरफ, ये शॉट भी खेला। स्पिनर्स को काफी अच्छा खेलने के लिए गए, लेकिन ये बॉल लो रही थोड़ी। मिर्जा जैन बेग की अपील थी, कॉन्फिडेंट तो नहीं थे, लेकिन अंपायर ने उंगली जरूर खड़ी की। डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे और बाउंड्री भी कवर की और ये बैटिंग काफी अच्छी रही इनकी, क्योंकि अपनी टीम के लिए एक प्रॉपर बैट्समैन का रोल प्ले किया और लाहौर हीरोज को 9 विकेटों से जितवाया। आप देख सकते हैं इनकी शॉट्स और कहीं पर भी ये गैप्स ढूंढते रहे और कवर किया। ये आउटसाइड ऑफ स्टंप, ये बड़ी शॉर्ट बॉल थी जिसे पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर। एक बार फिर से ये बड़ी शॉट खेलने के लिए गए थे और फील्डर वहां नहीं पहुंच पाए। इस तरह लाहौर हीरोज ने अपना सेमीफाइनल जीता अगेंस्ट इस्लामाबाद वॉरियर्स और पहुंच गए फाइनल में कराची रॉयल्स के अगेंस्ट। और ये आप देख सकते हैं मैच समरी सेकंड सेमीफाइनल की Deconcepts सेलिब्रिटी लीग T10। इस्लामाबाद वॉरियर्स ने यहाँ पर टारगेट दिया था 90 रन का। आसिफ 39, रिजवान 11, आसिम 9, कामरान 2 विकेट्स, अरसलान 2 और इमरान 1 विकेट। लाहौर हीरोज ने बनाए 90 रन। दानियाल 51 के साथ नाबाद रहे। कामरान 29, सलीम 0 रन बना सके। मिर्जा जैन बेग ने 1 विकेट हासिल की, रिजवान 0 और अरबाज 0। लाहौर हीरोज ने मैच जीत लिया 9 विकेट से। जी बिल्कुल, और इसके बाद जो फाइनल हो रही जा रहा है, 2 बड़ी बेहतरीन टीमें वर्कआउट सामने आई। टोटल 6 टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा रही। पेशावर टाइगर की बात करें, उसके साथ साथ रावलपिंडी स्टार की बात करें, लाहौर वॉरियर हीरोज की बात करें, जो कि इस वक्त फाइनल में उन्होंने कदम रखा। पहली टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में कदम रखने वाली जो कल पहला सेमीफाइनल खेला गया, कराची रॉयल्स की टीम थी। साइम जी बिल्कुल, Deconcepts प्रेजेंट सेलिब्रिटी लीग और फाइनल आप देखेंगे कराची रॉयल्स और लाहौर हीरोज के माबैन कुछ ही देर में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से। तब तक के लिए कहते हैं आपको अल्लाह हाफिज। This TCL T10 brought to you by